recording is started. Let me share my screen. I hope the screen is visible to you. Let me spotlight myself. Correct. That's it. So first of all, let me start with the introduction. Who am I? So my name is Rohan Paramne. Name is Rohan Paramne. So the spelling, if you need it, that's Paramne. And I'm in SunBeam since last, working in SunBeam specifically since last 10 plus years of experience. 10 plus years of experience in training domain, training into different languages like C++, the Java, the SQL language, technologies like advanced web programming, the Android programming, hybrid, as well as we could say the web programming. So having a quite really good experience into the training domain. Now, what we are about to start is a core Java. And when you talk about core Java, what exactly you are about to learn inside it? Let's understand that first. So you are going to learn core Java. So in core Java, the main target is going to be our OOP concepts. So we are going to look for how these OOP concepts are going to be implemented inside it. That means what about abstraction, what about encapsulation, what about we could say modularity, what about hierarchy, how these concepts are being implemented into the Java. So the first thing is like we are going to learn this part. The second thing, when you're going to learn all these OP concepts, we need to understand, because it's a new language that you're going to learn, we need to understand what are the language fundamentals. Language fundamentals. And when you talk about language fundamentals, you generally are going to see what are the different data types, what is the syntax that we are going to follow, what are the rules that we are going to follow, how the project needs to be created. Because सारे language fundamental, not only that, even from the installation में क्या क्या चाहिए, all these things we are going to first of all understand it into the language fundamentals. Then we will see how the OOP concepts are implemented by this language. इस language ने उस OOP concepts को कैसे implement किया. So maybe you can consider our entire first week is dedicated for this. यानी कि पहला पूरा week is dedicated for the language fundamentals and the OOP concepts. Now, once you are really good into it, that means once you are like we could say comfortable into that language, into the object-oriented concepts and this particular language, then this is where we will start with the concepts and the functionalities given by this language. यानी कि language ने क्या दिया हुआ है? What this language has given. So this language has given the different concepts, like the very first and the newer concept that you'll be looking at is something called as interface. So what exactly the interface is? Not only that, the variations into the interface of two different versions of Java, that means till Java 7 and from Java 8 onwards. In दोनों में differences क्या है? That is what we are going to look at first. Next, we are going to talk about the concepts into the Java called as generics. Very important topic of Java. Even if you want to learn something called as a collection framework, तो उसके लिए सबसे important है generics. Generics in the sense, आप एक ही code, because you can write a particular code only once that can work for any type of data. यानी कि जो आप generic algorithms देखते हो, जो आप data structures implement करते हो, so for that data structures to work for any type of data, उसको Java में किया कैसे जाता है? How we can do it in Java? That is what you are going to learn into the generics. Next, you are going to learn the collection framework. One of the important framework, it is the collection framework. Into the collection framework, you will understand what are the different collection classes, in the sense how the data structures are already implemented for you in Java. And कि Java ने उसका पूरा collection आपके लिए कैसे बना के दिया है, how you can start using it. So this is what you will be learning it inside this framework. तो आप ये framework भी पढ़ो. Not only that, we will be also learning one of the nice topic in Java, which is most required. It is the exception handling. Exception handling. Whether you learn core Java, whether you learn the advanced Java, आप advanced Java के पास जाओ, core Java के पास जाओ, आप data structures का implementation में करो, anything that you are going to do without exception handling, it is going to be incomplete. बिना exception handling के आपका पूरा code incomplete होने वाला है. So this is what again we are going to learn. Not only that,
if you talk about Java, Java has shifted its entire journey from being an OOP to something called as a functional programming language. अगर आप आज की जावा की बात करोगे, if you talk about the newer versions of Java, now the Java targets the functional programming way. It does not targets the object oriented way. हाँ वो अभी भी है, it's still an object oriented programming language, but now it is targeting a newer way of programming that is called as the functional programming. So we will be also looking at what is functional programming in Java. We'll be looking at what is functional programming in Java. In the functional programming, we will talk about the lambda expressions. And based on the functional programming, there are the newer APIs that are given by the Java. That is nothing but the stream APIs. So this is what again we are going to talk about. So stream APIs are totally, we could say, built on the functional programming part of Java. That means how the entire task can be done in a kind of a pipeline of operations. So this is again what we are going to learn inside this module. Not only that, after that, we will be also talking about the persistent part, where we will talk about the Java's IO framework. Java's IO framework, or maybe you can call it in simple terms, the file IO. So how the file IO can be done in Java, this is what we are going to learn inside this. Not only that, we also need to learn what is multi-threading. How you can create multiple threads. That means you can perform multiple tasks at the same time. So again, this is one of the major concepts if you talk about going for Android applications, or if you want to create such native applications, or even into, we could say, advanced Java. If you look at that, there are going to be multiple operations that you need to perform without blocking the main UI. Now, how this is possible? कि main UI को block ना करते हुए, how to perform some tasks into the background. So to perform those tasks into the background, you need to create multiple threads. So for that, we need to understand how do we create those threads in Java. So what exactly the multi-threading is. This is what we will learn. And two last but very important topics required in core Java as well as in advanced Java. Specifically, if you are going to go for advanced Java later on, you must have the idea about these topics. The first one is the annotation, and the last one is the reflection. So again, two of the most important topics, annotation and reflection. So these are the topics that we are going to learn in this core Java. So even if you talk about this core Java, it is not only about just creating a simple class, working with objects or calling the methods. No, it is not only about that. The entire core Java is all about understanding the different functionalities given by the Java language. And why people go for Java language, and ऐसा Java language के पास क्या है, what are the concepts that it is providing, and based on that, what are the things that are being getting created. तो ये सारी चीजें we are going to learn it inside this module, or we could say inside this your modular batch. First of all, any questions into this? Any questions that what exactly these topics are, or are there any missing topics that we are having over here? Because these are the same topics that we can at least cover in the next 20 days. So जो 20 days का हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, for 4 hours daily, total we could say 80 hours का जो ये पूरा का पूरा core Java की batch है. So this core Java batch is dedicated in understanding all the particular functionalities of the core Java, specifically core Java, that will make you comfortable. Believe me, that will make you comfortable first for the interviews if you are giving onto the core Java. अगर आप कुछ interviews देना चाहते हो onto the core Java, it will make you comfortable. It will make you interview ready. Second, if you are targeting your main courses, that means if you are going for the main courses, like either going for the advanced computing, either going for the mobile computing, or we could say any other courses, this is going to make your fundamentals very strong. आपके OOP के fundamentals, and the first thing, जितना Java लगता है, again it is not that simple, but whatever the time that you are investing right now is going to help you to make your fundamentals really strong. So आप इसके basis पे you can start learning any of the other languages. See, the OOP concepts will not change. The concepts of class, objects, functions will not change. The methods will not change. The concepts of overloading, overriding will not change. Whatever the collection framework, the implemented classes are, arrays, we could say array list, the linked list, that will not change. यानी कि जितने भी सारे चीजें सीखोगे, technically, the conceptually, programmatically, we could say the things are not going to change. Only the syntaxes are going to change. And if you take the same thing or the similar things, if you try to look into the Python, you will find the similarities between them. आपको दोनों में सारा similarities दिखेगा.
If you map it with the C++, you will again find the similarities between them. सभी में आपको similarities दिखेगा. The changes are the syntaxes and the way the concepts are given by those languages. उन languages ने जिस way से concepts दिया हुआ है, based on that, those things are going to change it a bit. Let me know. Any questions so far? No? Then that's fine. Let us first of all talk about the language fundamentals. Now let us say that I want to start with the Java programming, मुझे Java के साथ start करना है. So where do I begin with? यानी कि how do I start with that? Should I start directly with the OOP concepts? No. First we need to understand that if I want to write a Java code at least, अगर मुझे Java का code भी लिखना है, the first thing that I should have is the entire environment on which that entire thing can be done. So for example, जैसे अगर आप कोई भी C का कोड लिखते हैं, if you are going to write a C code, you are going to create a file called as let's say hello.c. तो ये जो hello.c फाइल आप क्रिएट करोगे, can I say this file needs to be compiled? इस फाइल को आपको करना क्या पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा. After the compilation, यानी कि when you are going to compile करने के लिए you say something like gcc hello.c. ये gcc क्या होता है? What is gcc is actually? This gcc is nothing but your your C compiler that you have downloaded it. What it is? It's a C compiler that you have downloaded it. Now this C compiler, what it is going to do? It is going to convert this C language. That means whatever the code that I have written it into something called as we could say an assembly language first. सबसे पहले वो convert किसमें होगा? Assembly के अंदर. From that assembly, whatever it is going to convert it further is going to what? You are going to get something called as an executable file. An executable file, it is a file that is understandable by an operating system, जिसके अंदर कुछ execution के commands होंगे. The intermediate file that is going to be created while compilation is going to be an assembly, and from that assembly, another file will be created that is nothing but an executable file. ये executable file, this executable file, you can execute it on directly on top of OS. आप इसको execute किसके ऊपर कर सकते हो? OS के ऊपर. So similarly like this, what if I want to create a Java file? C को तो हमें पता है that we know that for a particular C program, we need a compiler called as the GCC that is going to be downloaded. Whatever the compiler that you have downloaded, you are going to give a command gcc hello.c, which will create an intermediate file, an assembly, and that again is going to be converted into something called as an executable file. Executable file executes directly on top of OS. Similarly, what about Java? Java का क्या? So for this particular Java, what are the steps? Are we going to compile? Are we going to interpret? होने क्या वाला है? And for that, what exact the download that we need to perform? Is it the compiler that we need to download? Is it the interpreter that we need to download? तो exactly अब download करना क्या? Let us understand this first. Now, when you are going to work with Java, specifically the development, the one that you are going to do, you are developing these applications. So for these developers, to develop these Java applications, you need to download the JDK, which is also called as Java Development Kit. It is also called as Java Development Kit. What is JDK? Let me write it down over here. JDK. So JDK stands for Java Development Kit. Java Development Kit. If you wish to create the Java programs, if you wish to start creating multiple projects in Java, the first thing that you must have is the Java Development Kit. Now, what is there inside this Java Development Kit? इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा? First of all, let's understand it. क्या-क्या मिलेगा? The first thing that you are going to get is all the core libraries. What you are going to get is the first thing are all the core libraries. ये तो मिलेगा ही आपके अंदर. यानी कि whatever the predefined classes are created for you. Example के लिए, if you are writing a C program, you do not start the C program by defining what exactly the printf statement is. No. What you do is, inside your program, you directly include one header file जिसका नाम है stdio.h. What that stdio.h consists of? It consists of all the definitions for predefined functions.
जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन सी के अंदर है वो सारा का सारा stdio.h के अंदर डिफाइन किया जा चुका है. दैट मींस समथिंग हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू, सो दैट यू डोंट नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. आप कुछ फंक्शन उसमें से यूज कर सकते हो, जैसे प्रिंटिंग एंड हेलो वर्ल्ड आल्सो यू आर सेइंग printf. तो printf क्या हुआ? अ प्री डिफाइंड फंक्शन. Similarly, some predefined classes are present when you download the Java development kit, and that classes are all called as core libraries. इन core libraries को एक jar फाइल बना के रखा गया है जिसे कहा जाता है rt.jar, runtime.jar. In Java, all those classes are grouped together and one particular jar file gets created. इसका full form है Java archive. So that Java archive, that jar file consists of all those predefined classes that have been created. So this is the first thing that you get inside the JDK. When you download the JDK, ये आपका सबसे पहला चीज है जो आपको मिलेगी. Not only that, you also get along with this some tools that you require. Some tools that you require. What are the tools? The tools like Java C. Now, what is Java C? Java C is Java's compiler. What is Java C? Java C is the Java's compiler. There is one more tool called as the Java. What is this Java? It's a Java tool for execution. It's a tool for execution. It's a tool for execution. Similarly, there are multiple tools that are going to get. These are the two tools that we are going to use right now. There are similar like this multiple tools. So for example, we have something called as a Java P. We have something called as a jar. So that means if you want to create the jar files out of it, we have something called as the Java docs. That means if you want to create the documentation of whatever the code that has been written. So I say multiple tools are present inside this downloaded JDK. जो भी JDK आप download करोगे, the first thing that you are going to get are the core libraries. आपको rt.jar मिलेगी, and you are going to get some tools. And the most important thing that you will get inside this JDK is called as JRE. Is called as JRE. This is nothing but Java's runtime environment. Now, when you talk about JRE, JRE is actually the combination of two things. JRE is actually the combination of two things. One, the core library rt.jar, and the second thing that it has inside it is called as JVM, जिसे कहा जाता है Java's virtual machine. It is called as Java's virtual machine. Now understand it in this way. जब आपको जावा का डेवलपमेंट करना है, whenever you want to develop anything in Java, the first thing that you must download is JDK. Without this JDK, you cannot start with Java. Without this JDK, you cannot start with Java. JDK के साथ दो चीजें मिलेंगी. Inside this JDK, specifically, you are going to get two things. एक JRE and another one are all the tools. At least two things at the code. इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है. You get something called as documentation along with it. लेकिन दो मेन चीजें. One is JRE, another is tools. What are the tools? The tools that we talk about over here. So we have Java C and the Java. One used for compilation, another used for, we could say, execution. एक compilation के लिए, एक execution के लिए. At least two tools. And what we get is a JRE. ये JRE के अंदर क्या है? What is there inside this JRE? So inside this JRE, what do we have is JVM, or maybe I could say rt.jar plus JVM. What do we have inside the JRE? We have rt.jar plus JVM, and then we have the tools. What is rt.jar consist of? अरे rt.jar के अंदर क्या है? Inside this rt.jar, we have all the core libraries. Inside the rt.jar, we have all the core libraries. What do we have inside this JVM, or what exactly this JVM is? So this JVM is nothing but the Java virtual machine. Combination of this both creates your JR. A combination of this both creates your JR. JRE stands for Java's runtime environment. What does the JRE stands for? उसका full form क्या है? What does the JRE stands for? JRE stands for Java's runtime environment. Now, why it is important to understand these two things, the JDK and the JRE? Now understand this. Whenever you write a Java code, you are going to compile this code, and whatever the compilation is going to be done, it creates one intermediate file. ये एक intermediate file create करेगा. So suppose I have one of a program
called as hello.java. Now when you are going to compile this code, when you are going to compile this code, Java में compilation होता है, and to compile this code, the command that you are going to use is javac. Javac hello dot java. Whatever the name of the Java file is, you are going to compile. Whenever the code is going to be compiled, it creates one intermediate file. एक intermediate file create होती है, and the name of the file is a dot class file. Hello dot class. Whatever the name that you have given, based on the same name, it creates a dot class file. अब ये जो dot class file होती है, in this case of C, whatever you get is an directly executable file. But Java does not gives you any executable file. वो आपको executable file नहीं देता है. What it gives you is a dot class file. Now this dot class file needs to be executed. यानी कि अगर आपने hello world का भी प्रोग्राम लिखा है, I want to execute it on my machine now. Now if I want to execute it, that means I want to execute it on my operating system. ये मुझे operating system के ऊपर execute करना है. Now can we execute any dot class file directly onto the OS? नहीं. What the operating system or on top of OS, what we can execute are the executable files. exe files को execute कर सकता हूँ. If I am on Windows, if you are on Linux or Mac, there is something called as the out files. So here, if you talk about, we have something called as a dot class file. We don't have an executable file. So if I want to execute this dot class file, then I need someone who can carry forward these instructions to the OS. And again, what I can execute onto the OS are the executables. What I can execute on top of OS, on top of operating system, are the executables. OS को binary के form में instruction समझ आता है. That means specifically CPU understand the instructions in the case of binary form. तो वही instructions are going to be converted by this operating system. तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो समझ आए वैसे फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस आपने देना है. ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अंडरस्टैंड द जावा कोड. ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा का कोड समझ नहीं आता है. वी हैव कंपाइल्ड इट, लेकिन कंपाइल होने के बाद वन इंटरमीडिएट फाइल इज क्रिएटेड. वन इंटरमीडिएट फाइल इज क्रिएटेड, और उस इंटरमीडिएट फाइल के अंदर होता है बाइट कोड. व्हाट द कोड दैट वी हैव इनसाइड इट इज कॉल्ड एज द बाइट कोड. ये जो बाइट कोड है, whatever the byte code that has been created inside this is not understandable by the OS. ये OS को समझ ही नहीं आता. Now to give that instruction to the operating system, we need someone which can convert this byte code to the machine understandable code, and that one is nothing but your JVM. और कोई नहीं बल्कि है JVM. So what you need in between is a JVM. What you need in between is a JVM. What does the JVM stands for? Java Virtual Machine. ये जो particular JVM है, this JVM is going to convert. This JVM is going to convert your intermediate code. That means your byte code into machine understandable code. यानी कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, whichever operating system, whether it's a Windows, whether it's a Linux, whether it's a Mac OS, what you require is a JVM on top of it. Now this JVM will convert your code, your hello.class, whatever the bytecode that you have, into the machine understandable code, and will be responsible to execute it on top of OS. यानी कि अगर आपके पास जावा का कोड है, that Java code, which is the compiled Java code, now can be executed not on OS but onto the JVM. बल्कि उसको execute करना किसके ऊपर है? That needs to be executed on top of JVM. This is what you need to do. Now, whenever you talk about ये JDK, when we are going to talk about that JRE, the tools, the JVM, तो क्या ये सारे इंडिविजुअल हमें डाउनलोड करने हैं? No. All these things that you are going to get it by downloading just the JDK. आपको सिर्फ और सिर्फ JDK डाउनलोड करना है. You just need to download the JDK and you get all of them. You will get the tool of javac of compiling it. You will get the tool called as the Java. Look at that, Java Hello, which will execute. That means which will pass on this dot class file to the JVM for the execution. Your JVM will interpret that bytecode. वो आपके bytecode को interpret करेगा, will convert it into the machine understandable code and will execute it on top of OS. ये आपके operating system के ऊपर आपका कोड execute करते हैं. First of all, let me know, is it clear how the Java code is going to execute? Java का कोड directly OS के ऊपर execute नहीं होगा. In between we need the JVM.
अब ये JVM मिलेगा कहां से? सो फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड दिस JDK, आपको वो JDK डाउनलोड करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई आई सेड आवर फर्स्ट स्टेप टुडे इज गोइंग टू बी डाउनलोडिंग द JDK. Now, if you have downloaded that JDK earlier, and if you are from, we could say C, or we could sorry, from the CSIT backgrounds, or we could say any AIML, AIDS, any of the other backgrounds, so you might be downloading, or you might have this JDK previously downloaded. So that JDK is sufficient, no problem into it. If you haven't downloaded the JDK so far, you can just go onto the browser. आप सिर्फ browser के ऊपर जा सकते हो, and you can search for JDK. So you can say JDK download, पर जाकर के हो JDK download. It will take you to the Oracle's website, which is an official, we could say, website to download all the Java's JDKs. And specifically, Oracle is the one who maintains all those Java's versions. So you can go over here and you can look for the different JDKs that are available. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो JDK 26, JDK 25, something called as JDK 21. I recommend you should start with something called as the JDK 21. JDK 21 is having a long-term support for it. And second, whatever the core Java that we are going to learn, this JDK is more than sufficient for us. इस JDK के अंदर, and specifically the STS version that I'm going to use, they right now are having the support for the previous versions, यानी कि Java 8 तक का support अभी तक वहां पे है. As you go for the newer versions of JDK, the older version support you might not be able to see it into it. हमें बस टेस्टिंग के लिए, हमें बस सीखने के लिए कुछ पुराने वर्जन चाहिए, सो दैट वी कैन कंपेयर कि अच्छा इस वर्जन में क्या था, नेक्स्ट वर्जन में क्या अपडेट हुआ. इफ यू गो फॉर हायर वर्जन, प्रीवियस के सभी वर्जन के कुछ कुछ चीजों को डेप्रिकेट किया जा चुका है. सो दोस थिंग्स यू माइट नॉट बी एबल टू सी देम. सो जस्ट टू सी, जस्ट टू विजुअलाइज कि पहले जावा में क्या था, बाद में क्या आया, वी विल स्टिक टू सम प्रीवियस वर्जन. थोड़े से प्रीवियस वर्जन पे हम लोग स्टिक रहेंगे. Specifically, I am sticking to right now JDK 21 so that I can also get and support of, we could say, even previous versions into my STS. First, so you can go on to the JDK. अगर आपके पास है ही नहीं, if you don't have that JDK, you can click on that JDK 21 and यहाँ पे जाकर के आप उसका पैकेज डाउनलोड कर सकते हो. Not only that, depending on whether you are onto the Linux, whether you are onto the Mac OS, depending on you are onto the Windows, आप जिसके ऊपर भी हो, you can just download that particular JDK. If you want, you can go for JDK 25. If you want, you can go for JDK 26. But my recommendation will be stick to JDK 21. So today you are going to perform this download. आप Windows के ऊपर होगे, you can go for x64 installer. अगर आप चाहे तो आप MSI installer के पास जा सकते हो, जो कि आपको next करके देगा. You can go for an executable, जो कि खुद ब खुद execute कर सकते हैं, या फिर zip के पास जा सकते हो, where you can download that zip, where you can extract it into one directory. उसका path वगैरह सारा चीज आप सेट कर सकते हो. So depending on whichever the particular file that you want, you can download it and you can start proceed with the installation as you are comfortable. नहीं तो सबसे बेस्ट है that you can download an exe file and you can start downloading it. You can start clicking on next. आप ये भी कर सकते हो. If you are onto the Mac, you can go for something called as the DMG file. आप DMG के पास जा सकते हो. Again next and it is going to finish. If you are onto the Linux के ऊपर कमांड भी मिल जाएंगे, या फिर you are going to have this packages से आप, we could say, clicking on extracting that package or giving a command, you can start installing sudo. Instead of using this, you can give a command by saying sudo apt-get install, we could say open JDK, whatever the version that you need. तो आप ये भी कर सकते हो. So either onto the Linux, if you are that means specifically if you are using an Ubuntu and so, you can use the commands and you can install it. If you are onto the Mac or Windows, you already have those installers available. Now this is what you are going to download, और जो download करोगे, whatever you are going to download, this is what is going to install the JDK on your machine. अब ये देखोगे कहाँ पे, whether that is been installed or no. You can go inside the control panel. आप आपके control panel के अंदर जा सकते हो. You can go into the programs and features. और यहाँ पे जाके आप notice कर सकते हो that what has been installed is something called as the JDK. What you'll be able to see is something called as the JDK. Can you see that what it says? It says Java Development Kit and it gives you the version. तो ये exactly आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा. That means it is now available inside your, we could say, device. Now when the software is available inside your device, that means when the Java Development Kit is available into the device, it creates some directory structure over there. आपके C drive के अंदर, यानी कि if you have kept it as a default installation as a C drive, तो आपके C drive में ये कुछ folder structure को create करता है. So what that folder structure is, let us understand. Just बस समझते हैं, just बस देखते हैं कि exact installation में हो क्या रहा है. So if I go inside the C drive, so let me open that
directory for you. Let me go inside C. These are going to be like we could say program files, and this is the Java. And you can see inside the program file Java, we have something called as JDK21. यानी कि जो आप इंस्टॉलेशन करने वाले वट एवर द जेडीके दैट आर गोइंग टू इंस्टॉल उसी का एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है JDK21. व्हाट इट ब्रिंग्स मी टू द टेबल, ये मेरे पास लेके क्या आता है, इट ब्रिंग्स मी these directories with it. Bin, conf, include, jmods, legal, and something called as a link. What's there inside this bin? ये bin के अंदर क्या है? If you look inside this bin, you will find all the different files. Not only that, you will find something called as, can you see that? Java.exe. You find something called as javac.exe. You find something called as the java w.exe. We have similar like this. There are different, we could say, executable files that you are going to see it over here. ये जितने भी executable files देख रहे हो, these are some of the tools that are available. जैसे for example jmod.exe, you have something called as a jpackage.exe. ये जितने भी आपको यहाँ पे exe files दिख रहे हैं, all these are nothing but we could say the executable files that we have. यानी कि the tools that I was talking about, जो tools की मैं बात कर रहा था, javac की बात कर रहा था, java की बात कर रहा था, it is two tools I was talking about. Java.exe, javac.exe, javadoc.exe. All these are the tools that it has brought along with it. And not only that, it has also brought something called as jvm.dll. You'll be able to see jvm.dll. So is it visible inside the 21 package? So where it is? Here it is. So this jvm.dll, that means specifically, if you talk about this JDK's bin directory, what it brings me are the two things. आपको tools भी मिलेंगे, यानी कि what you are going to get inside it are going to be the tools that you need, plus you have something called as this JRE. यानी कि JRE in the sense the runtime environment inside which we have this JVM. तो JVM भी एक executable होता है, JVM भी एक executable होता है. So this JVM is the first thing that gets executed on top of OS. तो आपके जावा के प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, the first thing that gets executed on top of OS is the JVM. इस JVM के अंदर आपका कोड यानी कि आपका hello.class यानी कि whatever the particular files that you want to execute, वो कोड उस JVM के अंदर एग्जीक्यूट होगा. Now whatever these tools plus this JVM are, ये सारी चीजें रखी कहाँ पे गई हैं? Where these things are kept? These things are kept inside this bin directory. These things are kept inside this bin directory. ये bin directory के अंदर है. Now, similarly, if you talk about, we could say the libraries, या rt.jar, runtime.jar की जो मैं बात कर रहा था, where that rt.jar is, ये rt.jar आपको मिलेगा, यानी कि ये सारे core libraries आपको मिलेंगे inside this folder called as jmods. तो rt.jar, runtime.jar, वो है किसके अंदर? वो इस mods के अंदर है. इसे कहा जाता है modules. Earlier, till Java 8, what we had was something called as the jar files that were present. .jar करके jar files थे, but Java 9 onwards they changed it to something called as the JMods, Java modules. तो ये सभी jars को अब एक particular module के अंदर wrap किया जा चुका है. It's a kind of a container. तो जो आपको पहला JMod दिख रहा है java.base वाला, इस base के अंदर वो particular jar file है जिसे कहा गया है rt.jar, which consists of all your core libraries. When we are going to go into an STS, मैं आपको ये open करके दिखाऊंगा. Right now we don't have any programs that can open this module, Java module, but the IDs can understand this Java modules. IDs को इन modules को समझ ठीक से आता है. So there you will be able to see कि इस base के अंदर exactly रखा क्या गया. So I'll be showing it to you what is there inside this JMod. So JMod stands for Java modules, which is a newer variant, newer version that has been called from Java 9 onwards. ये Java के 9th version से इसको change किया गया है, but till Java 8 there was something called as the jar files. That's why I said कि Java के कुछ versions में काफी changes हुए हैं, and this is the first change that you're able to see happening from Java 9 onwards. So ये जो rt.jar की मैं बात कर रहा था, this rt.jar now being converted to something called as a JMods from Java 9. ये कहाँ पे है? So this is inside this JMods directory. अगर आप यही वर्जन JDK का वर्जन if you switch to something called as Java 11 or not even Java 11, अगर आप Java 8 वाला डाउनलोड करोगे onto the internet, if you search for JDK 8, तो आपको JDK 8 में instead of JMods you will find something called as a jars, rt.jar ऐसे फाइल आपको दिख जाएंगे. So you'll be getting something called as the libraries, और libraries के अंदर you'll be getting those particular rt.jar. Java 8 तक
उसके बाद वाले आपके के जेडीकेज में यू विल बी फाइंडिंग दिस डायरेक्टरी कॉल्ड एज द जेमॉड्स. Let me know any questions so far. I have already JDK extracted in my D drive, but I cannot see it into the program. Programs में कैसे दिखेगा सो? You have entirely shifted your installation to the D drive. तब वो D drive के extracted folders में दिखेगा. You won't be able to see it into the C. This is what when you click on next, by default उसका installation C drive में होगा. But if you are trying to install it by yourself, by changing the directory, वो सारा installation आपको अलग वाली directory में दिखेगा. You'll be able to see it into the different directories. If you talk about the configuration, it talks about configuring that particular configuration files that you can use it for configuring this particular JDK. If you talk about include, again, whatever the core libraries that it requires for building the Java libraries, that files it has kept over here. अगर आप यहाँ पे notice करोगे, Java language is built on top of we could say C++. तो जो भी header files वगैरह उसको core वाले चाहिए, so that have been kept over here. That's why the name of the directory is include. Generally, there are something called as the native methods in Java. उन नेटिव मेथड्स के लिए लगने वाले भी वी कुड से नेटिव लाइब्रेरीज आर केप्ट इनसाइड दिस इंक्लूड. यानी कि उसको जितनी भी .h दैट मींस स्पेसिफिकली C++ के फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, व्हाटएवर द कोर लाइब्रेरीज दैट इट हैज रिटर्न और नेटिव लाइब्रेरीज दैट इट हैज रिटर्न इन C and C++, दोस लाइब्रेरीज आर केप्ट इनसाइड समथिंग कॉल्ड एज अ इंक्लूड. आपको इससे कुछ भी करना नहीं है. यू आर नॉट हियर टू वर्क एनीथिंग इनसाइड दिस JDK और यू आर नॉट गोइंग टू मॉडिफाई एनीथिंग इनसाइड दिस JDK. But you must at least know what the JDK is bringing me to the table. वो JDK मेरे पास लेके क्या आ रहा है? So the JDK is bringing me all the executables, that means all the tools, along with the JVM. It is bringing me all the JMods. JMods are nothing but the Java modules, the jar files that we need. Second, we can configure it. We have something called as the include, and we have something called as the library. So ये सारे folders जो JDK के अंदर दिख रहे हैं, so these are responsible for your particular JVM and the Java code to work. Specifically, pehla, the JVM to work onto that particular operating system, to execute onto the operating system, and for that JVM, whatever the things that are required around it, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे के अंदर मिल जाए. You are not here to modify anything. यहाँ पे एक भी चीज को modify नहीं करना है. You are not going to touch anything, but at least you must know where the installation is kept and what kind of installation is being kept. बस पता होने के लिए we have shipped. Now once we know what we are installing, अगर अब मुझे पता चल चुका है कि मैं इंस्टॉल कर क्या रहा हूं, आई एम इंस्टॉलिंग दिस JDK फॉर व्हाट? फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा कोड, यानी कि मुझे जावा का प्रोग्रामिंग करना. सो व्हाटएवर आई हैव इंस्टॉल्ड, व्हाट इट ब्रिंग्स मी टू द टेबल, अगेन दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एंड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसका जो भी पाथ है बिन तक का, दैट इज बाय डिफॉल्ट एडेड इनसाइड योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स. अगर आप चेक करोगे, इफ यू गो इनसाइड योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो पाथ के अंदर इफ यू गो इनसाइड द पाथ, यू कैन फाइंड इट आउट कि आपके बिन तक का पाथ, स्पेसिफिकली आपके बिन तक का पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. सो इफ यू हैव क्लिक नेक्स्ट, so this path is also been added automatically inside your environment variables. तो इसका फायदा क्या होगा? What is the benefit of having the path inside this environment variable? और या फिर जो भी particular installation हुआ है उसको मैं लेकर के क्या कर सकता हूँ? Now see the magic. Once everything is installed, you can open the command prompt. I'm not even using an STS or I'm not using anything else. I'm just opening a simple command prompt, Windows command prompt. And in that Windows command prompt, I'm going to say Java -version. The moment I say Java -version, is it giving me the information कि कौन से Java का version install हो चुका है? It is immediately detecting क्योंकि इसका path environment variable में जा चुका है. The path that has been added inside the environment variable is still the bin path. और इस bin के अंदर what I'm using is this command called as Java. Can you see that java.exe? जो मैंने अभी आपको दिखाया था, this was something called as a java.exe. तो ये जो java.exe वाला पाथ है, so this executable file, this tool that I'm using, ये देखो Java, the tool that I'm using, और उस tool के आगे मैंने कुछ instruction दिया, and the instruction is give me the version. So I'm asking the Java to give me the version. It gives me the version. It says now you have something called as Java 21, the long-term support version installed on your machine. Can I start using the tools directly now? यानी कि जो भी टूल्स मैं दिखा रहा था, whether I was showing you something called as the Java C, the Java P, the Java doc, or we could say the Java tool, can I use it directly from the terminal, directly from the command prompt? Yes. अब मैं सीधा यूज कहां से कर सकता हूं? सीधा from the command prompt. This is how you can start programming in Java. This is how you can start programming in Java. First of all,
लेट मी नो, इज व्हाट गेट्स इंस्टॉल्ड क्लियर टू यू? इंस्टॉलेशंस में क्या क्या है, इज इट क्लियर टू यू? हाँ, ये बस इंफॉर्मेशन है, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड इट। इससे बाकी कुछ लेना देना, यानी कि प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा कर पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव इंस्टॉल्ड, हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया है, एंड वंस यू नो दैट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट जावा इज डूइंग, बिकॉज लेटर ऑन वी एक्चुअली नीड टू टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ जीवीएम। हमें आगे जाकर के जीवीएम का आर्किटेक्चर भी समझना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमाइजिंग द कोड। अगर आपको आगे जाकर के कंपनीज में कभी कोड्स का ऑप्टिमाइजेशन करना है, इफ यू विश टू ऑप्टिमाइज द कोड, then it is mandatory to understand what the JVM is actually, what the JVM consists of, where the memory areas are, what the type of memory areas are, what is that class loader subsystem, what is that execution engine, ये सारी चीजें उस JVM के अंदर क्या है, that we are going to understand it later on. But yes, first we need to understand what exactly the Java is and how the Java code can be executed. Any questions so far? यहाँ तक किसी को कोई questions? Fine, thank you. Now let us go ahead and let us talk about how do I execute that Java code. पहले ये सोचते हैं कि जावा का कोड अगर मैं अब बनाऊंगा, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट इट, हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट? तो पहले सिंटैक्टिकली कोड को लिखेंगे, वी विल राइट, वी विल सी, वी विल बी हैप्पी टू सी हेलो वर्ल्ड पहला वाला कोड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑल द कांसेप्ट्स अराउंड। यानी कि फिर हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्टार्ट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स, हम लोग उसकी भी बात करेंगे व्हाट इट इज। देन वी विल टॉक अबाउट कि जावा में क्लास ऑब्जेक्ट होता क्या है, एंड सो ऑन एंड सो। लेकिन पहले प्रोग्राम लिख के तो देखते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन राइट एन हेलो वर्ल्ड इन जावा, what are the things that we need to follow. Now for writing that particular hello world or writing that particular Java file, you can start using any of the available editors with you. आपके पास जो भी available editor होगा, whichever available editor that you have, whether you have the notepad, you use it, whether you have anything else, you can use it. Notepad plus plus होगा, we could say VS Code होगा, whatever the editors that are available to you, you can use it. So in my case, what I have is a VS Code. मेरे पास जो है, it's a kind of a VS Code that I have. Let me open that particular directory day one, and inside this, I'm going to write the Java code. Now see how I'm going to write it. सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा. Initially, I'm going to create a file. Let us call it as a hello.java file. Obviously, बात है, if you are writing a Java code, you are going to create the file with an extension called as a .java. Look at the extension, it is .java. I want to print hello world over here. I want to print hello world into the output. Now to print that hello world, you are going to first of all create a class. Now sir, don't we have something called as a main? Yes, we do have it. So जैसे हमारे पास होता है integer main in C, we have something called as, we could say integer main in C++. ऐसा ही entry point function क्या जावा के पास नहीं है? But whatever the thing that you're going to create in Java, that means even the entry point function that you're going to create in Java must be kept inside a class. Must be kept inside a class. अगर आपको क्लास पता है, very good. अगर नहीं पता है, hold on, understand it. Syntax है, must be followed. It's a syntax. Whatever you have to keep it inside the class. So I'm going to name that class as hello. जो भी मेरे फाइल का नाम है, I have kept the name of the file, say class hello. Now inside this class, you can write the entry point function. And what is entry point function? Main. Now to write the main in Java, it must be compulsory. Compulsory, I'm saying. Compulsory, it must be declared in the same way by saying public static void main. It must be compulsory. I'm saying compulsory, written like this, public static void main. Not only that, it must compulsory accept an array of strings. यानी कि अगर आपको मेन लिखना है जावा का, if you wish to write the main in Java, it has to be compulsory public static void main and compulsory accept one parameter which is going to be an array of strings. It is nothing but what? Array of strings. Compulsory. इसमें अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे, if you misplace anything over here, if you do not pass that particular string array, if you do not make it as a static, if you do not write it as a public, Java code will not execute. ये execute नहीं होगा. Believe me, it will not be executed. Let me show it to you.
Inside this main, I'm going to say hello world. How do we write the hello world? यानी कि जैसे हमारे पास we had something called as a printf function in C++. We have something called as an object called as a cout. Sorry, printf in C. We have something called as a cout in C++. Similarly, in Java, we have one method called as a println. We have a method called as a println. But to use that println, to use that method println, compulsory you have to say system dot out dot println. How you have to say it? You have to say system dot out dot println. Now why like this? Again, hold on for it. जब हम लोग static सीखेंगे, when we are going to talk about objects later on, you will be able to understand कि हम लोगों ने इसे ऐसा क्यों लिखा हुआ है. Why we have written it like this. अभी starting with the Java, you immediately cannot understand it क्योंकि हमें पता ही नहीं क्लास ऑब्जेक्ट स्टैटिक क्या है. सो कंसिडरिंग आपको कुछ नहीं आता है, कंसिडरिंग कि हमें सर कुछ पता ही नहीं है. सो बेस्ड ऑन दैट जस्ट से कि दिस इज द सिंटैक्स दैट यू नीड टू राइट फर्स्ट. पहले सिंटैक्स है उसको यूज करो. Inside this into the double quote you can say hello world. What you can say hello world. Inside this whatever you have kept now needs to be compiled and needs to be executed. इसको compile भी करना है, execute भी करना है. How do I compile and how do I execute it? Now please observe. Go into the directory where it has been created or open the terminal in VS Code. अगर VS Code होगा तो VS Code यूज करो, अगर नहीं होगा in any editor, अगर आपने नोटपैड में भी ये कोड लिखा था तो भी चलेगा. Even into the notepad you have written the code तो भी चलेगा. Go inside the directory where the code has been created. जैसे for example, in my case, the code has been created. Inside we could say modular. Let me pin this batch. Let me say pin to the quick access. Where it is. Sorry, pin to the quick access. So inside this CJ018, inside this day01, what do we have? Is we could say hello.java file. यहाँ पे वो hello.java file. So I will go over here and open the command prompt. इस command prompt को open करते हैं. And inside this command prompt, if you look at this, right now I am inside this path. मैं अभी day 1 के अंदर आ चुका हूँ. And inside this day 1, what do we have? Is this file called as the hello.java. Now I want to execute it. Now see what happens. Let me keep it to the side. Let me keep it side by side. So let me keep that folder over here. And please check what happens. Java C. I'm going to compile a file. Java C is a tool used for the compilation. Which file do you want to compile? So the name of the file is hello.java. What's the name of the file? Hello.java. यहाँ पे notice करो. Please notice on the left hand side right now I just have got two files right now. One is a help file, the empty file that I have, and the second one is the hello.java file. Now when I'm going to say compile this, hit enter. When I'm going to say compile this, it has compiled it and it has created one more file for you. Can you see that? उसने एक और फाइल क्रिएट की जिसका नाम है hello.class. What it has created is a class file. Can I execute that class file directly on top of OS? यानी कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ./hello.class? No, ये कह नहीं सकते. Because this class file cannot be executed directly on top of OS. No, where the execution has to be done. वो execution कहाँ पे होगा? Where the class file can be executed. Is it understandable by the OS? क्या OS को directly समझ आएगा? अरे is it understandable by the OS? No. Who is going to understand it? ये समझ किसे आएगा? Who is going to understand the .class file? Already we have discussed. Who is going to understand this .class file? समझ किसे आएगा? Who is going to understand it? आपके सामने है, highlight कर रहा हूं. Who is going to understand the .class file? Correct. The JVM. So the JVM, the Java Virtual Machine, it will be converting that bytecode. यानी कि ये सभी इंस्ट्रक्शन को वो कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड जो ओएस को समझ में. नाउ हाउ विल यू टेल दिस टू एग्जीक्यूट इट ऑन टॉप ऑफ जेवीएम? यानी कि ये जेवीएम को एग्जीक्यूट करके उसके ऊपर आप ये पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करोगे कैसे? सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दैट टूल कॉल्ड एज द जावा. तो जो जावा टूल आपने वर्जन चेक करने के लिए यूज किया था, द सेम जावा टूल दैट यू हैव टू यूज इट एंड यू हैव टू से जावा and the name of the dot class file without giving the extension. यहाँ पे उसका एक्सटेंशन मत यूज करो डॉट क्लास का, यानी कि हेलो डॉट क्लास ऐसे एक्सटेंशन मत यूज करो. जस्ट द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल. व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल? हेलो. हिट एंटर एंड टेल मी आर यू एबल टू सी द हेलो वर्ल्ड इन द आउटपुट नाउ? अरे दिख चुका है. दिस इज हाउ यू स्टार्ट कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द जावा कोड.
These are the steps for compilation and execution. चलो बताओ, what are the steps? पहला स्टेप है जावा सी, नेम ऑफ द जावा फाइल. दिस इज गोइंग टू कंपाइल दिस कोड. कंपाइल होने के बाद क्या मिलेगा? हेलो डॉट क्लास फाइल मिलेगा. व्हाट डज द हेलो डॉट क्लास फाइल कंसिस्ट ऑफ? इट इज एन इंटरमीडिएट फाइल कंसिस्टिंग ऑफ बाइट कोड that is understandable only by the JVM. That is understandable only by the JVM. तो इस JVM के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है? Whatever the name of the dot class file is, you have to use it with the tool called as the Java. That's it, which will execute it on top of JVM. Let me know, is this compilation and execution of the Java code clear to you? Or is it clear to you? Yes, very good. So just mention it. The dot class file consists, the dot class file consists of bytecode that is only understandable by the JVM. That is only understandable by the JVM. ये bytecode सिर्फ JVM को समझ में आता है. तो execute the dot class file, use the command, or we could say use the below command. Use the below command. We could say, what's the command? Java. We could say name of the dot class file, or instead of hello, I could say name of the dot class file. Name of the dot class file. That's it. Let me know, is it clear so far? यहां तक सबको क्लियर है? Very good. Now I wish that till here today you are going to complete your installation, or at least यहां तक, यानी कि specifically creating your first example and executing it आप complete करोगे, at least, so that installation के कल से कोई problems नहीं आने चाहिए. Everything has been recorded. ये पूरा record भी हो चुका है. The recording will be available to you. Recording, we will be just I will be sharing that instruction after this break. I will take the decision based on the policy whether this video will be available onto the YouTube. The day one video will be available onto the YouTube, or it should be posted inside, we could say, the students portal. पहले जो भी पहले के 2 दिन है, so these 2 days are like we could say the demo sessions for the other students as well. तो अगर जिनको like if they wish to continue, if they have any other decisions, so they can understand it into the first 2 days. तो स्पेसिफिकली पहले दिन का सेशन हम लोग जनरली यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करते हैं, बट एज पर द पॉलिसीज अगेन आई विल टेक द फाइनल कॉल ऑन टू इट एंड वी विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो. तो वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. सो बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग यू कैन हैव अ क्विक रिकैप ऑफ इट अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स होंगे तो, एंड मेक श्योर दैट द इंस्टॉलेशंस आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड. ये पूरे इंस्टॉलेशंस आप करके रखो. If there are going to be any problems with the installations, you can stay back into the meeting later on. So at the end of it, you can stay back into the meeting. You can ask me those things. I will take up those doubts. So far, what we have done is like we have created our application, we have executed that application, and now we know how actually the Java works. Now we have to enter into the fundamentals of it. अब हमें थोड़े से fundamentals के अंदर deep dive करना है. We need to understand what are the concepts around it, what are the object oriented concepts, and how the Java is going to implement it. Java के अंदर technical implementations धीरे धीरे in the entire week we are going to see it. ये immediately possible नहीं है, आज ही के दिन सारा possible नहीं है. In the upcoming, or we could say this entire week till we could say Friday, हमारा पूरा OP ही चलेगा. That means we are going to see the abstraction, we are going to see the encapsulation, we are going to see the polymorphism, we are going to see the inheritance. ये सारा part ये पूरी week हमारा चलेगा. So let's begin with it. Let us begin with the concepts that you know. अब हमें जावा समझ आ चुका है. We know how to execute that Java code. जावा का कोड execute होता कैसे, ये सारा चीज समझ आ चुका है. Now we need to understand, first of all, or you can say those who already know it, it is going to be the revision for you. Those who don't know it, it will be the first time that you'll be learning what OP means. ये OP क्या है? Because when we talk about Java, the first thing that we say is Java is a, or is an OP language. जो पहला हम लोग कहते हैं, the first statement that we say is Java is an OP language. Java is an OP language. What this OP means? ये OP क्या होता है?
डू यू नो व्हाट दैट ओपी मींस? उसका फुल फॉर्म ही बता दो। व्हाट दैट ओपी? ओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इट टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या? लैंग्वेज है कि कुछ कंसेप्ट है? व्हेन यू टॉक ओनली अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज? Anyone who has done maybe the pre-cat earlier, they can help me with this. What this object oriented programming means? इसका मीनिंग क्या होता है? ये है क्या एग्जैक्टली? एक लैंग्वेज है, कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ मेथोडोलॉजीज है, क्या है ये? Those who have worked with earlier C, C++, any idea about it? C is a procedure oriented, C++ is an object oriented, ऐसे कुछ तो अपने टर्म्स सुने रहेंगे if you are from CSIT. You know that? Yes or no? अगर पता होगा तो yes, नहीं पता होगा तो no, so that I can begin with it. Do you know that, guys? Yes. No. हाँ, yes or no? अरे yes or no, guys, are you there? हाँ, no. Okay, that's fine. हाँ, देखो अगर आप बताओगे नहीं, if you are not going to tell me how I'm going to get those things. चलो, very good. So I'm going to say let's begin totally from scratch. पूरा scratch से हम लोग start करेंगे, considering कि आपको कुछ भी नहीं पता. When you talk about object oriented programming, these are these are the concepts. These are the concepts that needs to be followed. These are the concepts, or I could say methodologies. Methodologies needs to be followed. That needs to be followed by the programming languages. By the programming languages. By the programming languages that needs to be considered as an OP language. यानी कि जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर एज अ ओपी लैंग्वेज बनना है, इफ दे वांट टू बी कंसीडर्ड एज एन ओपी लैंग्वेज, देन दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ दिस प्रोग्रामिंग दैट दिस लैंग्वेजेस मस्ट फॉलो. यानी कि ये कुछ मेथोडोलॉजीज है जो उन लैंग्वेजेस के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए. दे शुड एग्जिस्ट इनटू दोज लैंग्वेजेस. So which are those concepts, which are those methodologies that needs to be followed by the languages that needs to be an OP language? So वो methodologies are being divided into two categories, or we could say they are divided into these two categories or two pillars. Now when you talk about this object oriented programming concepts, इसका एक straightforward simple सा definition है that any language that follows abstraction, encapsulation, we could say polymorphism and inheritance will be considered as an object oriented programming language. एक simple सा definition exist करता है. But because we are learning it from scratch, because we are trying to understand it, what exactly the OOP is, so थोड़ा सा आप in depth इसके बारे में थोड़ा सा in depth इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं. Let's work on it. According to 𝐤𝐫𝐬𝐵, the person, the inventor of UML, Unified Modeling Language, the one who gave these all concepts, the object oriented concepts, according to him, he said the concepts or the methodologies are divided into two pillars. These concepts, this OP is divided into two pillars. One, the first one, or maybe I can say OP is divided or categorized in two pillars. The first pillar is called as the major pillar, and the second pillar is called as the minor pillar. There are two pillars. One is called as the major pillar, another is called as the minor pillar. Inside this major pillar, we have abstraction. Second, we have encapsulation. Third, we have modularity. And the last one, we have hierarchy. According to the 𝐤𝐵𝐬𝐵, he said, when you talk about OP,
it has been categorized into two pillars. One is the major pillar, another is the minor pillar. Major pillar has got the concepts called as abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. In minor pillars, we have typing / polymorphism. Second, we have persistence. And the last one, we have concurrency. Last one, we have concurrency. So whenever you talk about object-oriented programming, inside the object-oriented programming, we have these two concepts, two pillars that we have. One is called as the major pillar, another is called as the minor pillar. Inside the major pillar, we have abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. Inside the minor pillar, we have typing / polymorphism, we have persistence, and we have concurrency. Now, what these pillars are, what these concepts are trying to talk about, कि है क्या exactly, एक pillar को आप थोड़ा सा explore करते हैं. Let us start exploring one by one each and every pillar. Let's start with the very first pillar, what it means by an abstraction. Do you know what is abstraction? जिनको पता है, so few of the people, one or two people know the concepts of this. Do you know what is abstraction? When you talk about abstraction, correct, so it is showing the essential details. Very good. We can say getting to know only the essential things. Getting to know only the essential things. That's it. When you say abstraction, abstraction in a sense बस उतना ही information gather करो, उतनी ही information यहाँ पे लो जितनी की जरूरत है. Rest all details we don't want it. इसे कहा जाता है abstraction. Real life example, if you are using a mobile device, if you are using, we could say, a kind of a laptop or any particular desktop out there, if you are using a bike, if you are using a car, आपको सिर्फ ये पता है कि उनको यूज कैसे करना है, बट यू डोंट नो द इंटरनल्स ऑफ इट. आपको ये नहीं पता कि पूरा मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ कैसे है. आपको ये नहीं पता कि हाउ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप और द डेस्कटॉप दैट यू आर यूजिंग, हाउ दैट एंटायर थिंग हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड. आपको उसके अंदर की एक भी चीज नहीं पता. व्हाट यू नो आर ओनली द एसेंशियल थिंग्स, यानी कि उसके अंदर रैम कितना है, उसके अंदर स्टोरेज कितना है, व्हाट इज द स्क्रीन साइज दैट इट हैज, व्हाट इज द वी कुड से प्रोसेसर दैट इट इज बीन यूजिंग. बस आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी की जरूरत है. If you talk about a bike or a car, आपको सिर्फ ये पता है वो कितने सीसी का है, what will be the average of that particular we could say bike, what's the cost of that particular bike, what are the positive things about that particular bike. सिर्फ आपको इतना ही पता है. But how that entire bike has been constructed, how that entire car has been constructed, उसके डिजाइन पैनल से लेके we could say internals of the engines, ये हमें नहीं पता. What we only know are the essential things about it. तो इसे ही कहा जाता है abstraction. Abstractions in the sense getting to know the things in an abstract manner. सिर्फ जितनी चाहिए उतनी उठाओ, उसे कहा जाता है abstraction. जैसे आज ही आपने एक प्रोग्राम लिखा, today itself you have written one program. Hey, look at that, hello world. Hey, many of you don't even know what exactly the class is doing over here. Many of you don't even know what exactly the main method is doing over here. ये आपको पता ही नहीं है. So if we don't know what it is doing right now, but still we are able to run it. Why? Because हम लोगों ने बस ये समझा कि लिखना कैसे है. What we only know, what we have with us is only the essential things. I know that if I want to print an hello world, it has to be written exactly like this. Now, why it has written like this by saying public static void main, why it has written like this system.out, ये हमें नहीं पता. But what we know is, if I write it in this way, the program is going to execute. इसे ही कहा जाता है abstraction. First, is abstraction clear to you? Abstraction क्या होता है? यानी कि अभी देखो start कहाँ से किया? Where we started with an abstraction. कि abstraction में यही चीज होता है. अगर मुझे नहीं पता है तो एटलीस्ट काम चलने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ आई वांट टू वर्क विद इट, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट आई मस्ट हैव, उतनी इंफॉर्मेशन को गैदर करो. दैट इंफॉर्मेशन यू शुड बी गैदरिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन. लेट मी नो, इज एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर? रियल लाइफ एग्जांपल, इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन, हाँ, is the abstraction first of all clear? Abstraction getting to know the essential things. आप कोई भी चीज, whatever the things that you are able to see, वो सारी चीजों में वही चीज होता है. यानी कि इफ यू आर ट्राइंग टू परचेस एनी प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट की बस उतनी ही डिटेल्स यूज करते हो जितनी आपको जरूरत है. यू डोंट फॉल इनटू हाउ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड. नाउ
आप कोई भी पर्टिकुलर विकल्प से मोबाइल फोन लेना चाहोगे, वेदर यू गो फॉर सैमसंग, वेदर यू गो फॉर Xiaomi, वेदर यू गो फॉर Oppo, Vivo, वेदर यू गो फॉर एन एप्पल डिवाइस, आपको ये पता है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है विच इज बेनिफिशियल टू मी. So if I'm going for, we could say kind of Samsung, अच्छा उसमें से मुझे क्या बेनिफिट है, maybe I wish to go for the longer, we could say number of days to use it, go for it. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे कैमरास अच्छे चाहिए, सो यू माइट बी स्विचिंग टू समथिंग कॉल्ड एज एन Oppo and Vivo. नहीं सर मुझे वो कैमरास और सेल्फीज के बीच में वो एप्पल का लोगो भी चाहिए, यू माइट बी स्विचिंग टू समथिंग कॉल्ड एज वी कुड से द आईफोन एंड सो. यानी कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन ओनली द इसेंशियल थिंग्स दैट आर गैदरिंग इट एंड यू आर गोइंग फॉर दोस पर्टिकुलर डिटेल्स. This is what we call as an abstraction. If you talk about the implementation of abstraction in any programming language, I'm not only talking about OP, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखोगे, so every time you are always on an abstract level. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन अ सी कोड, जैसे हम लोगों ने इनिशियली बात किया, इफ यू हैव रिटन अ सी कोड, तो सी के अंदर आपने स्टार्ट कहां से किया, बाय राइटिंग डायरेक्टली अ प्रिंटफ स्टेटमेंट. आपने सीधा सीधा वहां पे क्या, आपने कहा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड. So whenever you are saying printf hello world, look at that into the C program, whenever you are saying printf statement, it don't you think ये printf बस यूज कैसे करना है, that was the first thing that you have learned. यानी कि उसके अंदर आपने क्या लिखा था, hello world ऐसे ही लिखा हुआ. You just came to know that अरे this is a printf statement or this is a printf function that is already defined inside one class. ये already एक class के अंदर define हो चुका है, a class in the sense एक header file के अंदर inside one library it has already been defined and the name of the library is stdio.h. ये already defined है. Do you know how it is defined? No. Do you know how internally it has been created? How many number of parameters it has? No. यानी कि हमें वो सारी चीजें पता ही नहीं. We don't have any information about it, but what we know is how to use it. हमें क्या पता है उसको यूज कैसे करना. Similarly, if you talk about, we could say the println function. Println function, Java का println function. Here also you have written exactly the same. आपने उसको भी सेम ही वे से लिखा. You have written in Java there is this function called as a println. हमें ये पता भी नहीं where that particular println is, how the function has been defined. ये define कैसे किया ये भी नहीं पता. But what we know is अगर इसको कॉल करना है I have to say system.out.println. मुझे सिर्फ इतना पता है. ये what we know is like only this much, how to print it, that's it. Other than that we don't know the entire information about ये println exactly है क्या, अच्छा ये out क्या है, system क्या है, but no, we know write it like this. इसे ही कहा जाता है abstraction. So when you talk about in terms of technical things or if you talk about in terms of programming, abstraction is nothing but calling a method slash function. आपने यहाँ पे एक टर्म सुना होगा मेथड, मैं बहुत बार कह रहा हूं मेथड. द रीजन इज व्हेन यू आर इन जावा, जावा सेज डू नॉट कॉल देम एज फंक्शंस, कॉल देम एज मेथड्स. तो ये जावा का कन्वेंशन है. जावा कहता है कि हमारी यानी कि हमारी लैंग्वेज के अंदर, जावा की लैंग्वेज के अंदर, यू शुड नॉट कॉल देम एज फंक्शंस, यू शुड बी कॉलिंग देम एज मेथड्स. ये एक टर्म यूज किया जाता है, टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है इनसाइड दिस लैंग्वेज. फंक्शन भी कहोगे तो भी चलेगा. टेक्निकलिटी ये करेक्ट है, लेकिन जावा के वे से दे से प्लीज कॉल इट एज अ मेथड्स. सो इट इज द वे द जावा कॉल्स इट. तो मेथड को या फिर फंक्शन को कॉलिंग अ मेथड और अ फंक्शन, यानी कि उन फंक्शंस को कॉल करना, मेथड्स को कॉल करना राउंड ब्रैकेट के साथ, इसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन. इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, calling the method is an example of abstraction. So what are the examples of abstraction? What are the examples of abstraction? The first example is calling the method. The first example is calling the method, or you can call it as a calling a function. The second one is creating an object. Creating an object. अब ये क्या है? We will be looking at it into the Java when we talk about class, object and reference. ये हम लोग आगे देखेंगे, but example लिख के रखो. So for right now, we know that whenever you're going to call any methods like a printf from the C program or println from the Java program, this represents abstraction inside those languages. ये क्या represent करता है? This represents an abstraction into those languages. Let me know. Is the first abstraction clear to you? Abstraction क्या होता है? Is the first abstraction clear to you? Very good.
If the abstraction is clear, then the second part or the second major pillar inside it is encapsulation. The second major pillar is encapsulation. So whenever we make a class and create an object for it, we are indirectly using abstraction. Correct. So every time you are creating an object, just underline that creating an object is where you are using an abstraction. कि जहां पे आप abstraction use कर रहे हैं. Creating a class or defining a class, ये हमारे second example में आएगा. The one that I'm going to create right now. Encapsulation. Can you tell me what is an encapsulation? Hey, can you tell me what is encapsulation? Chalo, Shantanu, good. Binding the data, good. Wrapping methods and cases, okay, very good. So encapsulation means binding the things together. Binding the things together, or maybe I can put down a technical definition by saying binding the data and code together. Binding the data and code together is called as encapsulation. Without this encapsulation, abstraction is not possible. यानी कि अगर encapsulation होगा ही नहीं, then abstraction is not possible. You can also say it like this: hiding the unnecessary things. Unnecessary things. उसका non-technical definition, if you want it, you can say hiding the unnecessary things. Hey, what is abstraction? Getting to know the essential things. यानी कि जितनी चाहिए उतनी ही चीजें यहाँ पे फेच करो. In the sense, unnecessary चीजों को क्या करो? Hide करो. That is nothing but encapsulation. Sorry, that is nothing but the encapsulation. Encapsulation and abstraction both are two sides of a single coin. दोनों एक ही coin के दो अलग-अलग sides हैं. Without encapsulation, your abstraction is not possible. बिना encapsulation के abstraction possible नहीं है. जैसे अगर आप unnecessary चीजों को hide नहीं करोगे, तो जो important चीजें हैं वो आपको मिलेगी कहां से? If you do not hide the unnecessary things, how are you going to get only the essential things out of it? जैसे for example, if you talk about a mobile device, तो mobile device को manufacture करने के लिए, if I want to manufacture that mobile device, I have to take into consideration a lot of things. I have to understand which processor first of all to use. Then second thing, I have to understand which storages that we should be using, which storage we should be using for a RAM. Specifically, if I want to go for a storage of, we could say internal storage of, we could say around 64 or maybe I could say 128. तो कौन से exactly storage के पास में जाऊं? Then which are the cameras that I should be using? अच्छा मैं रियर कैमरा के लिए कौन सा यूज करूं, फ्रंट कैमरा के लिए कौन सा यूज करूं, बैटरी कितने में एम्पियर्स का यूज करूं. So all those things I have to gather the entire information and I have to create a particular device out of it. And the device has to be in a budget if I want to sell it into the market. Imagine करो अगर मुझे एक मोबाइल खुद का एक प्रोड्यूस करना है. I am the producer of a mobile device. I am a company who is going to create a new mobile devices. तो अगर मुझे एक मोबाइल डिवाइस क्रिएट करना है तो मुझे देखो कितनी सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है. But for the end user, that end user is not going to think about all those things. End user will think about कि क्या उसके बजट में सबसे पहला is going to be his budget. If I'm going to have a budget of around we could say 15 or 20,000, तो उस 15 और 20,000 के बीच में am I getting a particular device having this processor, this camera, this particular we could say battery and so and so. वो बस उतना ही he is going to care about. But rest of the things कि वो सारी minor चीजें कि मैं कौन से vendor से लेके आऊं, that which vendor is going to provide me those cameras. अच्छा, what are the costing of that megapixel cameras? Second, who is going to provide me those batteries? अच्छा, बैटरी का कॉस्टिंग कितना जाएगा? अच्छा, second thing, if I want to put a display onto it, तो वो Gorilla Glass कौन से कैटेगरी का फिट करूं so that it is going to be into the budget. So all those things, unnecessary things, which is unnecessary for the end user, that I have to think about it and I have to process it together. I have to bind it together to create a simple mobile device. मुझे उन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा? I have to bind them together. उन सभी चीजों को बाइंड करना पड़ेगा so that I can create a mobile device out of it. और जो आपके हाथ में मिलेगा, what you are going to get inside your hand is a mobile device जिसके कुछ necessary features को बस आप यहाँ पे record से notice करोगे. That means you are going to notice only the essential, only the required things. क्या चाहा क्या उसके अंदर इतने 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और maybe 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, whether it is having a selfie camera into it, whether it is going to have that particular battery that is going to last for a day. आप बस उन नेसेसरी चीजों को चेक करोगे कि जो वहां पे आपको दिख रही है. Other than that, whatever are the unnecessary things that we have
put together. Unnecessary नहीं बोल सकते, but the unnecessary things for the client which are not required for him while purchasing a device, but that has to be taken care by those particular, we could say, companies who are going to manufacture those devices. उसे कहा जाता है encapsulation, where they are binding those things together to create a solid mobile device for you. वो सारी चीजों को बाइंड किया जा चुका है एक मेटल फ्रेम के अंदर या फिर एक प्लास्टिक फ्रेम के अंदर, which is going to be given you as an output of it as a mobile device to you. इसे कहा जाता है encapsulation. So what is encapsulation? Binding the things together. जैसे अगर आप टेक्निकल चीजों के बारे में बात करोगे, if you talk about the technical things, in abstraction you are calling that particular method, calling that particular function. अरे बट वो फंक्शन किसी को तो लिखना तो पड़ेगा ना. अरे someone has to define that function. अगर किसी ने डिफाइन ही नहीं किया तो आप कॉल कहां से करोगे? If no one is manufacturing that mobile devices, how you are going to use it then? So creating a particular function or a method is an example of encapsulation. तो अगर आप इसके examples की बात करोगे, if we talk about examples of encapsulation, what is an example? Defining the method or a function. Defining the method or a function is called as encapsulation. Not only that, defining a class is also considered as an example of encapsulation. तो जो भी चीज है, देखो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, whatever the object that are going to create is going to be created of a class. यानी कि अगर क्लास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. Similarly, if the functions are not defined, if the methods are not defined, will you be able to call them? No. That means without encapsulation, abstraction is not possible. अगर किसी ने वो printf statement define ही नहीं किया होता तो, think about it. If the printf statement was not defined, आप क्या करते? If the printf statement in C was not defined, don't you think you have to create those particular functions then? आप उसको आउटपुट में शो करोगे कैसे? How you are going to print anything onto the console? It was not possible. That means you have to write the entire code of printing those things onto the console. ये सारी चीजें कंसोल के ऊपर प्रिंट करने का कोड आपको लिखना पड़ता. But now what the developers have done is they have created the function for it called as a printf, and they said you just focus on giving the message. आप बस message यहाँ पे दो. Rest all the things that requires to be printed onto the console, we will take care of it. So that means they have defined this function for you, and you are just calling the function by understanding what exactly the arguments needs to be passed. यानी कि सिर्फ वो नेसेसरी चीजों के बारे में, यानी कि इसेंशियल थिंग्स के बारे में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, एंड यू आर जस्ट कॉलिंग दैट फंक्शन. यानी कि फंक्शन को क्या पास करना है? आर्ग्यूमेंट. पास दैट आर्ग्यूमेंट. दैट्स इट. So for you it is abstraction, but for the person who has defined it, the developers who have defined it, for them this is an encapsulation. यानी कि एक ही फंक्शन जो डिफाइन करेगा उसके लिए encapsulation, जो कॉल करेगा उसके लिए abstraction. Let me know. Is it clear? Are these two concepts, abstraction and encapsulation, clear to you? Very good. Now the next thing, abstraction समझ आ चुका है, encapsulation समझ आ चुका है. Now the next thing, modularity. Next thing, modularity. Hey, can you tell me what's modularity? नाम से ही पता चल रहा है. Modularity. Do you know what is modularity? No? नाम से? Very good, Shantanu. It says dividing the code into smaller functions or into multiple different files. इसे कहा जाता है modularity. What is modularity? When you talk about modularity, it says dividing the code into smaller, or we could say into multiple functions or multiple files. And multiple files. इसे कहा जाता है modularity. That means whenever you are going to start writing the code, are you going to write each and everything inside just the main? क्या वो पूरा का पूरा प्रोग्राम आप मेन में ही लिखने वाले? No, it doesn't sound good. Specifically, everything should not be kept inside the main, because main is a calling function. Main is a calling method.
आपने ऐसा सुना भी रहेगा इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन सी, इन सी प्लस प्लस एज वेल एज इन जावा आल्सो, इट्स द सेम थिंग. मेन जो होता है एंट्री पॉइंट मेथड या एंट्री पॉइंट फंक्शन जो होता है, इट इज जनरली कॉल्ड एज द कॉलिंग मेथड. दैट मीन्स वॉट एवर द फंक्शंस दैट यू हैव डिफाइंड, उनको बस वहां पे कॉल करना होता है. यू शुड नॉट डिफाइन एवरीथिंग इन. So can I say if I want to perform multiple operations, I first of all create multiple different functions. जैसे अगर मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, यानी कि अगर मुझे लेट्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, कैन आई से फॉर दैट आई क्रिएट दिस फंक्शन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. ऐसे में क्या क्रिएट करूंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम फंक्शंस. तो ये जो फंक्शंस आप क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग, द फोर फंक्शंस दैट आर डिफाइंड टू परफॉर्म फोर डिफरेंट ऑपरेशंस comes into the category of modularity. और यही तो चीज है modularity. Not only that, if I have created these functions, can I keep it inside one file called as the arithmetic operations .c or .java? तो ये सारे ऑपरेशंस कौन से, लेट्स से अरिथमेटिक ऑपरेशंस है. अच्छा, इसके अलावा maybe I want to perform some other things, like we could say I want to accept something from user, maybe I want to display something from user, maybe ये accept और display मुझे कुछ employee के related काम करना है. I want to do it with the employee word. So can I keep it into something called as a employee.java or employee.c file? Yes. तो जो भी पर्टिकुलर काम जिस भी पर्टिकुलर वी कुड से एंटिटी के लिए करता है, सो इफ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब फॉर एज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, इफ आई एम एक्सेप्टिंग एंड डिस्प्लेइंग फॉर एन एम्प्लॉय, so what we can do is we can separate even these functions into two different files. एक को मैं रख सकता हूं inside an arithmetic dot java और dot c file, और एक को मैं रख सकता हूं, one I can keep it inside we could say an employee file, employee.java or employee.c file. So dividing the code into different or smaller functions, and we could say different files, this is called as an modularity. इसे ही कहा जाता है modularity. एक तो पूरे कोड को आप अलग अलग फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो. नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो सेपरेट आउट इनटू टू डिफरेंट फाइल्स. टू क्या, मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मॉड्युलैरिटी. लेट मी नो, is modularity clear to you? Is the third major pillar clear to you? We are talking about all the major pillars. हम लोग major pillars की बात कर रहे हैं. We have talked about abstraction, we have talked about encapsulation, we have talked about modularity. Any questions so far? यहाँ तक किसी questions? No? Have you got these things? यहाँ तक समझ आ चुका है? Abstraction, encapsulation, modularity समझ आ चुका है? Because now we are entering into one of the most important pillar, that is hierarchy. बहुत ही ज्यादा important pillar है hierarchy. So this is the fourth and the most important pillar, hierarchy. And when you talk about hierarchy, it represents reusability. What it represents? It represents reusability. हायरार्की का मतलब ही है reusability. एग्जिस्टिंग कोड को कैसे रीयूज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कोड को कैसे रीयूज कर सकते हो. Now whenever you are going to reuse the existing code, there are two ways of reusing it. हायरार्की का मतलब होता है reusing, यानी कि एग्जिस्टिंग, सपोज मेरे पास एक ऐसा क्लास है, आई हैव वन पर्टिकुलर क्लास, क्लास का नाम है लेट्स से डेट. अब ये डेट एज अ क्लास ऐसा क्यों है, वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल्स, डू नॉट वरी ऑन टू इट. जब तक हम लोग 5 दिन पहले 5 या 6 दिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे जावा में, देयर आर गोइंग टू बी सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर दोस पीपल हु हैवंट लर्नड एनीथिंग लाइक अ क्लास और अ स्ट्रक्चर अर्लियर. एज्यूम करके चलो, देयर इज सम क्लास लाइक दिस कॉल्ड एज अ डेट. Inside this date class, we have this, we could say information about day, about month, about year. There is some information to store about day, month and year. हाँ वैसे before going for this example, let me know how many of you have completed your C programming earlier. यानी कि आपको C पता है. सर हमें C आता है, C programming आता है. Is it anyone who is learning everything for the very first time? ऐसा कोई है?
Yes, if it is there, you must tell me. Otherwise, पता कैसे चलेगा? So that the examples I can change it in that manner. तो मेरे examples थोड़े से उस way से change करूंगा. Have you all, whoever are the participants over here, have you all learned C language at least? ठीक है. Very good, very good, very good. चलो. At least पता है, basic पता है. So I will start from this part. Reusability की बात करेंगे. तो reusability से पहले, suppose into the main, ठीक है? Main के अंदर what I want is I want to store the information of a user's birthday. मुझे यूजर के बर्थडे की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. Inside this main, can I create these three variables? One is going to be day, another is going to be month, integer month, and we could say integer year. Day, month and year. क्या ऐसे में तीन वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकता हूं? प्रोग्रामेटिकली आई एम आस्किंग यू, कैन वी क्रिएट इट? ऐसा कोई प्रॉब्लम है? So that's no any problem. Yes, we can create, we could say just three variables and we can accept that day, month and year. Now can I say ये तो हुआ एक यूजर का, we could say this is the details of user 1. What if I want to accept the details of user 2? जैसे मैंने कहा कि can I create three variables, day, month and year? Variables की मैं बात कर रहा हूं. Can I create three variables? Yes. What these three variables are? The three variables are associated with the birth date of user 1. So like this, what if I want to accept the birth date of user 2? क्या user 2 के लिए are you going to once again declare these variables like this by saying this is day 2, month 2, year 2? What if I want to have it for a user 3? अगर user 3 के लिए चाहिए तो are you going to once again change it from user 2, whatever we had, the day 2, month 2 and year 2, to like we could say day 3, month 3 and year 3? Are you going to create like this the variables for accepting the date? क्या आप ऐसे करते हुए प्रोग्रामिंग करोगे? Is it a right way of programming? Tell me, is it a right way of programming? No. What's the correct way of programming? Can I say grouping these three variables together, can I create my own type of data type? By combining these three variables, can I create my own type of a data type? I'm saying, can I create own type of a data type? Answer is yes. And this is where you take the help of a structure in C called as a date, or you take the help of a class called as a date in C++ or Java. यानी कि आप किसके पास जा सकते हो? Either you can go for a structure if you are in C language, or you can go for, we could say, class if you are inside CPP or Java. आप CPP या Java में होगे तो आप class के पास जा सकते हो. What this structure or class is going to provide you? This will make sure that you have your own type of data type by combining multiple variables. That means instead of creating this day, month and year variables multiple times, what you can do is you can define it only once inside one structure, or you can define it only once inside that particular class. एक तो आप क्लास के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप हो, बेस्ड ऑन दैट you can just define those variables उस क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर. Now instead of creating those multiple variables like this, ऐसे multiple variables की जगह पे what you can do is you can just say for that user 1 मुझे चाहिए date type का वो object date d1. For that particular user 2 मुझे date of birth चाहिए. If you want a date of birth, you can say date d2. If for the user 3, if you want it, instead of declaring the three variables, now you can say this is going to be date d3. Tell me which one is more simpler now. If you observe it, you'll be able to see the variables has been defined only once inside this structure or once inside this class. Whatever they have been defined inside that particular type, whether it's a structure or a class, create the variable of that type. And use class structure type का variable create करो. That's it. So now tell me, which one was more simpler? Creating those variables multiple times inside the main, or defining it inside a structure or a class once and using that class or a structure type and creating their variables?
which one is more simpler now? Can you tell me? Definitely going for a class or a date. That means going for any of the structures, defining your own type. Now see here, defining a class or defining a structure is an example of encapsulation, and creating their objects like this over here is an example of abstraction. तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेन के अंदर जो दिख रहा है दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे जो आपने किया इसे कहा जाता है इनकैप्सुलेशन. फर्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आल्सो क्लियर टू यू? क्या ये भी क्लियर हो चुका है? अरे ये सुनो, सामने दिख रहा है ना, वी आर एबल टू सी इट इन फ्रंट ऑफ इट. वेरी गुड. नाउ सिमिलर लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे क्लासेस आपके पास क्रिएटेड रहेंगे. देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ सच क्लासेस दैट विल बी क्रिएटेड ऑलरेडी फॉर यू. यानी कि क्लास डेट आपने ऑलरेडी बनाया होगा किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर एक्सेप्टिंग अ डेट ऑफ बर्थ और समथिंग एल्स. Similarly, there is going to be one more class like this. For example, we are going to have a class called as a person. Person के अंदर कुछ details होंगे. Person is going to have person is going to have something called as a name. Person is going to have something called as a mobile. Person is going to have something called as an address, and so on and so on. तो person के पास भी बहुत सारी चीजें हैं. So इसे classes already अब क्या होंगे? Created होंगे. Now I want to reuse these classes. इन classes को मुझे reuse करना है. Okay, what I want is I want to reuse these classes. अब reuse करना कहाँ पे है? So look at this example. I have one class called as an employee. ये मेरे पास एक class है, class called as an employee. Employee is going to have the employee ID. Employee is going to have, we could say, name. Employee is going to have mobile. Employee is going to have the address. Employee is going to have the salary, and employee is going to have, we could say, the date of joining. देखो एम्प्लॉय के पास कितनी सारी डिटेल्स है. आईडी है, सैलरी है, वी हैव गॉट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दैट एम्प्लॉय, वी हैव गॉट, वी कुड से द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मोबाइल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय. So all those information, if that employee is having, should I declare those fields over here? That means if the employee is going to have the date of joining, should I write once again by saying this is going to be integer day, month, and year, which represents the date of joining? Should I once again say this is going to be the name, mobile, and we could say address of the employee like this? यानी कि जो fields को use करते हुए, if I have already created those classes over here, can't I just reuse the class inside this employee? Is there any need of defining it once again? क्या फिर से कोई need है कि यहाँ पे define किया जाए? Because for this particular date and for this particular person, Kinesis का implementation of accept and display already complete हो चुका होगा. Hey, don't you think these classes are already been completed? Even for that particular class person, can I say accept and display has already been completed? तो अगर इन क्लासेस का इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, can't we reuse that class on this employee? Can't we reuse that class on this employee? Tell me, what's your guess? आपको क्या लगता है? क्या हम लोग यूज नहीं कर सकते? Can we reuse this date and a person class for this employee, or should we define it once again like this? What do you think? Which one is better? कौन सा बेटर है कि यहाँ पे फिर से डिफाइन किया जाए कि और we should be reusing? Definitely we should be reusing the existing classes. अगर कुछ चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, if you are able to reuse it, आपने reuse भी करना चाहिए. And this reusability is represented by this hierarchy. ये reusability कौन represent करता है? So this is represented by this hierarchy. Now the question comes down कि सर इस employee के अंदर उस date या person class को reuse किया कैसे जाए? How do we reuse it? That means on that employee, how do I create the object of the date or object of the person within it? It depends on the type of relationship exists between the employee and those classes. Whenever you talk about hierarchy, there are two types of relationships. The first one is called as association, and the second one is called as inheritance. यहाँ पे दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं. पहला जिसे कहा जाता है एसोसिएशन, दूसरा जिसे कहा जाता है इनहेरिटेंस. Association is represented by a relationship called as a hazard relationship,
and inheritance is represented by a relationship called as a is a relationship. What do we have? We have these two relationships: association represented by a has a, and inheritance which is represented by a is a. Now you have to look for, आपको देखना पड़ेगा कि between that employee and the date, between the employee and a person, which relationship is going to be existed. यानी कि grammatically कौन सा type of relationship यहाँ पे perfectly fit होता है. So let me mention it. We have an employee and we have the date. We have the employee and we have the person. Tell me, employee और date के बीच में grammatically यहां से कौन सा relationship perfectly fit होता है? Is it employee is a date, यानी कि employee खुद एक date है और employee has a date. Employee has a date of joining कि employee is a date of joining. Obviously बात है, in between the employee and the date, the relationship that exists is a has a relationship. What about employee and a person? Employee has a person or employee is a person? Definitely, employee is a person. That means this employee is having two different types of relationships with these two different classes. With the date, it has got a has a relationship. With a person, it has got a is a relationship. So depending on type of relationship that it is going to have, the code is going to change slightly. A code थोड़ा सा slightly change होगा. If it's a has a relationship, अगर has a relationship होगा, then the object of this date class should be created as a field inside the employee class. तो क्या करना है? You have to create the field inside this employee class, यानी कि उसको as a variable declare करना है किसे? इस date class के object को inside the employee class. इसे कहा जाता है association. A word is called as association. CIAEDIY, association. And if is a relationship exists, अगर is a relationship exist करता है, so for that is a relationship, the person class, that means whatever the employee is having the relationship with another class, जैसे अगर person class के साथ, if it's a is a relationship, then that person class should be inherited on this employee class by saying extends. By saying extends. करने का तरीका बस चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. एक हैज अ, दूसरा इज. If it's a has a relationship, we call it as an association. If it's a is a relationship, we are going to call it as a inheritance. तो उसे हम लोग inheritance कहेंगे. Has a, is a, association, inheritance. If there's an has a relationship association, तो उस क्लास का, यानी कि the class that you're going to reuse, उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे एज अ वेरिएबल इनसाइड द एम्प्लॉय. And if the employee is having an is a relationship with the other class, the class that you want to reuse, then the reuse class should be said extends on that employee class. तो employee class के ऊपर आपको extend कराना पड़ेगा. That means you are going to have inheritance. First, what exactly these two types of relationships are? Is it clear? ग्रामेटिकल चीजों के ऊपर द सिंटैक्सेस आर गोइंग टू चेंज. मैं यही चीज कह रहा हूं कि प्रेजेंस यानी कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर हमारा सिंटैक्स स्लाइटली चेंज होगा. दैट मींस वन, आइदर वी आर गोइंग टू हैव एसोसिएशन और वी आर गोइंग टू हैव इनहेरिटेंस. एसोसिएशन में हम लोग एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं. इनहेरिटेंस में वी आर जस्ट सेइंग एक्सटेंड समथिंग. एसोसिएशन में क्या होगा, इनहेरिटेंस में क्या होगा, व्हाट आर द कांसेप्ट्स अराउंड इट, या हमारे डे 4 और डे 5 के कांसेप्ट्स हैं. सो दीस आर गोइंग टू बी देयर ऑन डे 4 एंड डे 5. First, we are trying to understand OP क्या कह रहा है. What OP is trying to tell us when it says hierarchy. जब वो hierarchy की बात करता है तो OP क्या कहता है? So it says there are two types of relationships. Has a, is a. Has a होगा, then you create the variable of it. If it's an inheritance, say extends. Let me know. Is these two types of relationships clear to you? ये दो टाइप के relationships clear हैं. Has a and is a. Everyone. Very good. This marks the completion of the major pillars of OP. Can you see that? We were talking about object-oriented programming. These are the concepts, these are the methodologies that needs to be followed by any programming languages that is going to be considered as an OP language. And this OP is categorized into two pillars. One is major, another is minor.
मेजर के अंदर वी हैव एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्युलैरिटी एंड हायरार्की। माइनर के अंदर वी कुड से पॉलीमॉर्फिज्म, परसिस्टेंस, कॉन्करेंसी बात करेंगे। बट फर्स्ट, आर ऑल द मेजर पिलर्स क्लियर टू यू? क्या सारे मेजर पिलर्स क्लियर है सबको? डू यू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्युलैरिटी एंड हायरार्की नाउ? वेरी गुड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, लेट मी मेंशन इट ओवर हियर। if a language if a language, or we could say if any language is following all the major pillars of OOP, then such languages are considered as OOP language. Any language that is going to follow all the major pillars, अगर कोई भी language सारे major pillars को follow करता है, then such language can be considered as an OOP language. If that language does not follow the major pillars, यानी कि उसमें से अगर एक भी pillar follow नहीं करता है, then that language will not be considered as an OOP language. यानी कि सिर्फ वही languages OOP languages है that are going to follow all the major pillars. Is it clear? Or is it clear? Following the minor pillars are optional. Following the minor pillars are optional. माइनर पिलर्स यानी कि जो अभी हम लोग देखने वाले, उनको अगर कोई भी लैंग्वेज फॉलो करता भी है तो भी ठीक है, नहीं फॉलो करेगा तो भी चलेगा, बट फॉलोइंग द मेजर पिलर्स आर कंपल्सरी. फॉलोइंग द मेजर पिलर्स आर कंपल्सरी. ये मेंशन इट फॉर एनी ओपी लैंग्वेज, फॉर एनी लैंग्वेज दैट क्लेम्स टू बी an OOP language must compulsory follow the major pillars. Must compulsory follow the major pillars. Let me know. Is it clear so far? सबको यहाँ तक क्लियर है? Very good. Now let us go for the minor pillars. अब थोड़ी minor pillars की बात करते हैं. Can you tell me what is the first minor pillar that we have? ये पहला minor pillar. First minor pillar लिखा हुआ है. Already we have seen that. The first minor pillar that we have is polymorphism. Do you know what is polymorphism? Anyone that might have heard about this? किसी ने बस ऐसे definition रटा होगा. Very good. One single entity that takes multiple forms. Very good. What is a polymorphism? Polymorphism is nothing but one single entity, that can take multiple forms. Example, आपके एक्टर्स, जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, so you can just take an example of them. Actor is one, यानी कि एंटिटी एक ही है, but he can take multiple different forms in the form of multiple different roles. यानी कि वही पर्टिकुलर एक्टर वो कभी पुलिस हो सकता है, वही पर्टिकुलर एक्टर कभी विलन हो सकता है, वही पर्टिकुलर एक्टर कभी लाइक वी कुड से अ काइंड ऑफ, वी कुड से जो बोलते हैं कि छोटे बच्चे का एक्टिंग अगर उसको करना है तो ही कैन बी इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. यानी कि वो उसका फॉर्म कभी भी चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट. इसे ही कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म. वन सिंगल एंटिटी जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपना फॉर्म चेंज करे, इसे ही कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म. व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स के होते हैं. When you talk about polymorphism, first a real life example. पहले पॉलीमॉर्फिज्म समझ आए एक्चुअल में होता क्या है. एक ही कुछ तो चीज होगी बट उसके फॉर्म्स अलग अलग होंगे, उसका बिहेवियर अलग अलग होगा. द बिहेवियर विल चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी थी अपरिचित, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट मूवी.
If not, then that's fine. So it's a movie where a person is having a kind of a multiple personality disorder, क्योंकि उसके अंदर उसके multiple forms एक साथ दिखते हैं. और मे बी यू माइट हैव सीन द धूम 2 मूवी. अगर आपको पता है तो ऋतिक रोशन की एक मूवी थी धूम 2, where the Hrithik Roshan is going to take multiple forms of that. Entity एक ही है, बंदा एक ही है, but the forms that he takes as per the requirement is going to change. कभी like he is going to be a kind of a statue over there, कभी like he is going to be a kind of we could say a policeman over there, पुलिस बन के भी कभी आता है. Sometimes he is going to be a kind of a garbage collector man. Sometimes वो actual जो चोर है वो उस तरीके से आता है. Sometimes he is going to be a kind of a businessman person जो एक होटल भी चलाता है. So he is a kind of an entity that is going to take multiple different forms as per the requirement. जो सामने requirement है, based on that he is going to change his form. उसे ही कहा जाता है polymorphism. And that is what we call as a polymorphism. So when you talk about polymorphism, technical terms में polymorphism की जब बात करोगे तो it says there are two types of polymorphism. पहले टाइप को कहा जाता है, or maybe I can say there are two types of polymorphism. There are two types of polymorphism. जो पहला टाइप है, the first type, it is called as the compile time polymorphism, and the second one is called as runtime polymorphism. The second one is called as the runtime polymorphism. पहला टाइप है compile time polymorphism, दूसरा टाइप है runtime polymorphism. Now this compile time polymorphism is going to be achieved by method overloading. The first type is going to be achieved by method overloading, and the second type is going to be achieved by method overriding. तो जो दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ आ चुका है, एंटिटी दैट टेक मल्टीपल फॉर्म्स. तो अब उसका इंप्लीमेंटेशन में करूं कैसे? हाउ डू आई हैव वन सिंगल एंटिटी कि जिसका फॉर्म्स में एज पर रिक्वायरमेंट्स चेंज करूं? नाउ दैट फॉर्म्स कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ मेथड्स. तो एक तो मेथड्स को आप ओवरलोड करोगे या फिर मेथड्स को ओवरराइड करोगे. इफ यू आर गोइंग टू ओवरलोड दोस मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस. अगर आप उन फंक्शंस को ओवरलोड करोगे, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर आप मेथड्स को ओवरराइड करोगे, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि हमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, इफ इनसाइड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इफ आई वांट टू अचीव दैट पॉलीमॉर्फिज्म, then either I should be going for method overloading or I should be going for method overriding. Let me know, is what is polymorphism clear to you? ये टेक्निकल है, अगेन एज आई सेड, इन चीजों को देखने के लिए यू हैव टू कीप सम पेशेंस. हाँ, जिनका ऑलरेडी हो चुका है, वी कुड से इफ यू हैव कंप्लीटेड योर C++ और इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पाइथन, यू माइट हैव सीन द कांसेप्ट्स ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. अगर देखा हुआ है, यू माइट रिलेट इट. अगर नहीं देखा है, होल्ड ऑन फॉर इट, मैं खुद दिखाने वाला हूं, बट नॉट टुडे. अगेन यू हैव टू वेट फॉर अराउंड, वी कुड से थर्ड डे तक वेट करना पड़ेगा, कल, और मे बी वी कुड से टुमारो, और टुमारो एंड ऑफ द डे और डे आफ्टर टुमारो यू विल बी लुकिंग एट द कांसेप्ट्स ऑफ एटलीस्ट ओवरलोडिंग. हम लोग ओवरलोडिंग तो पहुंचेंगे. ठीक है, होल्ड ऑन फॉर दैट. बट लेट मी नो, इज द theoretical concept of what is polymorphism clear to you? There is going to be only one entity whose forms are going to change depending on the requirement के basis पे. अब वो एक ही entity क्या होती है, that we will be looking at in terms of functions, in terms of methods. यानी कि एक ही method होगा, but we can pass different arguments or different we could say parameters to it, या फिर depending on the object that has been created, the behavior of the function is going to change. ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले. बट दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ माइनर पिलर दैट वी हैव. फॉलोइंग ऑल द माइनर पिलर्स इज ऑप्शनल. फॉलो करेगा कोई भी लैंग्वेज, इट्स गुड. अगर नहीं भी फॉलो करेगा, then there is no still a problem. The language will be considered as an OP language only and only if it follows all the major pillars. अगर वो सारे major pillars को follow करता है, OP है. Whatever the minor pillars that we are talking about, it is optional for the languages to follow. ये सभी optional है उन सभी languages को follow करने के लिए. But Java do follows all the major and the minor pillars. ये भले ही languages के लिए optional है, लेकिन Java जो है वो सारे pillars को follow करता है. It follows major pillars as well as it follows minor pillars. That means it has provided the implementation of all the major pillars as well as the minor pillars. तो Java में major के abstraction, encapsulation, modularity, hierarchy भी है, और जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, परसिस्टेंस और कॉन्करेंसी भी है. That's why. In Java, does it have operator overloading? No. जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है.
जावा के पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, जावा के पास पॉइंटर्स नहीं है, जावा के पास कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तीनों भी चीजें नहीं है, तो बच गए आप। आई कुड से दैट these three things are not that in Java. Fine. Now the next minor pillar, that we have is, हाँ कौन सा देखा था? The next minor pillar that we have is persistence. Whenever you talk about persistence, you talk about storing the data permanently. Storing the data permanently. यानी कि जो भी डेटा जनरली आप स्टोर करते हो, whatever the data that you save into the program, that stays into the program till the program executes. The moment the program is going to end, the terminate, the entire data is going to be gone. यानी कि पूरा का पूरा डेटा वहां से गायब हो जाएगा. So if I want to persist that data, अगर मुझे उस डेटा को persist करना है कहीं ना कहीं, यानी कि permanently सेव करके रखना है. Now this is where you should be having some features into the programming languages that will help you to persist that data. उसी को कहा जाता है persistence. So if a language is allowing you to store the data permanently, that means it is providing you the feature of persistence. Java के अंदर do we have the feature of persistence? Yes. And that feature is provided with the help of file. That feature is provided with the help of file. The file IO represents persistence. Simple. Here's the pillar, very simple. Persistence, helping to store the data permanently, represented by the concepts of file IO. And the last one, the last minor pillar that we have is concurrency. Whenever you talk about concurrency, concurrency represents executing multiple tasks at the same time. यानी कि आपको मल्टीपल टास्क का एग्जीक्यूशन करना है लेकिन एक साथ करना है. So if you want that, you should be having the feature of concurrency. Is Java having the feature of concurrency? Yes. Now this feature of concurrency is given with the help of multi-threading. It is going to be given with the help of multi-threading. Let me know. Is the minor pillars clear to you? Minor pillars काफी छोटे-छोटे हैं. छोटे-छोटे in the sense they are very straightforward pillars. Polymorphism. It says if you are able to use one entity that is going to provide different behaviors, multiple forms, you can go for it. Second, it talks about persistence. Persistence in the sense if you want to store that data permanently. So is there a we could say feature for it? And concurrency talks about are you able to execute multiple tasks at the same time? That means is the support of multi-threading given inside those languages? Giving the support of multi-threading, the file IO and the polymorphism is optional in any OP languages. अगर वो OP language provide कर रहा है, it's good. अगर नहीं कर रहा है, that also it's fine. But remember that OP must follow all the major pillars. Let me know. Is it clear so far? Are the major pillars and minor pillars clear to you? After the session, yes sir. ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, whatever the things that I have written in front of you, ये वाले notes, not only that, even a kind of a PDF file of the notes I'm going to share it with you. तो इसकी एक PDF file जो बनेगी, so even that is going to be shared to you. ये भी आपको मिल जाएगा. So all these notes are going to be given to you. Don't worry on it. ठीक है? ये सारा मिल जाएगा. Now today I'm going to add it inside the Git. मैं Git के अंदर ऐड करने वाला हूँ. The Git repository is going to be public. आप वो एक्सेस कर सकते हो. कैसे करना है, क्या करना है, we will talk about it. उसकी भी मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग में अभी after the break I'm going to show it to you. But ये सारा मिल जाएगा. Do not worry on it. सारे नोट्स मिल जाएंगे. Just let me know. यहाँ तक सबको क्लियर है? Is it clear to you guys? दो चीजें देखी है. फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द कांसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हम लोगों ने उसकी बातें की. सेकंड वी टॉक्ड अबाउट वी कुड से हाउ टू एग्जीक्यूट दैट जावा कोड. जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जेडीके का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने बातें की. वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस डिटेल्स. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस होगा, यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग द क्वेश्चंस. हाँ यस, द सेम थिंग. ये एक्सओपीपी जो फाइल मिलेगी इसकी भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी. So what you'll be getting is going to be the PDF of this file, the PDF of this file, यानी कि दो PDF फाइल्स आपको मिलेंगे. एक ये इमेजेस करके जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सेकंड
जो पूरे के पूरे नोट्स है, थेरोटिकल नोट्स जो बहुत सारे लिखे हुए वो, एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल कोड दैट आई एम गोइंग टू राइट, जो डेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो भी मिल जाएगा. So you are going to get three things over there: two PDF file, and we could say the data. Data in the sense the code that we are going to write. ऐसी तीन चीजें मिल जाएंगी आपको. Don't worry. Fine. Any other questions that you have? एक कोई questions है? No? Fine. Then let us take a break. एक थोड़ा सा हम लोग break लेंगे. Let me pause the recording. Let me say pause. Yeah. The recording is started. So, few instructions about we could say what we are going to do about today's videos. Today the video is going to be available onto the YouTube channel of SunBeam. So जैसे ही video available होगा, I will be sharing you that link to you so that whoever wants to like have a glimpse about what are the things that we have conducted, or maybe the introduction that I talk about, what are the things that we are going to learn into the core Java. So that will be available to the we could say students who are willing to join again. For the first 2 days at least, we have planned that the session is going to be like we could say available as a demo session for the students. But again, the time period of early bird offer has been vanished. Now the fees are about 8,600. So the fees have definitely been increased. Early bird has been stopped. So जो भी students को like they wish to continue, now they have to pay the full fees out there. So the first day at least today's session जो आज का होगा, that will be available onto the YouTube first. Second, जो कोड होगा that is available into the Git. So उसको एक्सेस कैसे करना है? So let me share it with you. आप दो वे से कर सकते हो. अगर आपको गिट पहले से आता है, इफ यू नो दैट गिट, यू कैन जस्ट से गिट पुल. आप गिट पुल कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा डायरेक्टली एवरी सिंगल डे. पहले इंस्टेंस में आपको गिट क्लोन करना होता है. द स्टेप्स रिमेन्स एज इट इज. अगर नहीं पता है, यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन लिंक. जो लिंक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो लेट मी ओपन दैट लिंक फॉर यू. So it is going to be github.com. We could say github.com sunbeam modeler/𝐤𝐬𝐽. ये जो लिंक है, that link I am going to share it with you onto the WhatsApp. So do not worry. ये आपको WhatsApp के ऊपर ही properly share होगा. So this is the link that I'm going to share it with you. जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा. So you will be having that particular data day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. No worry about it. ये जो लिंक होगी दैट इज गोइंग टू बी पब्लिक फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, यानी कि पहले 2-3 दिन के लिए हम लोग इसको पब्लिक रखेंगे सो एवरीवन कैन एक्सेस. बाद में द लिंक इज गोइंग टू बी मेड एज प्राइवेट. प्राइवेट इन द सेंस all those particular students who wants to access it, now they have to share that GitHub IDs. तो आपको बस एक GitHub के ऊपर आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है. आई विल शेयर दैट लिंक ऑन टू द डे 3. मैं डे 3 के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली करना है. एंड यू आर गोइंग टू शेयर योर यूजर नेम्स, कि बस उन्हीं यूजर नेम्स को उसके आगे का डेटा एक्सेसिबल होगा. यानी कि पहले 2-3 दिन द लिंक इज पब्लिक होने के कारण यू विल बी गेटिंग ऑल दोस डेटा डायरेक्टली. बट फ्रॉम द डे 4 ऑनवर्ड्स इट इज गोइंग टू बी मेड एज प्राइवेट. तो प्राइवेट के कारण ओनली द डेटा हु आर द पेड यूजर्स दे विल बी गेटिंग दैट फर्दर डेटा. तो उनको आगे डेटा मिल जाएगा. ठीक है. सो यू कैन एक्सेस इट. ये लिंक आपको मिल जाएगी. डू नॉट वरी. मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये लिंक आपको मैं ऐड करके दे दूंगा. सो द डेटा इज गोइंग टू बी शेयर्ड. ये जो भी डेटा मैं कर रहा हूँ दैट विल बी शेयर्ड ऑन टू द गिट. वहां से आप पुल कर सकते हो. नहीं तो आपको एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे बताता हूँ. कोड में जाकर के आप सीधा उसकी जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो. यू विल गेट एन ऑप्शन टू डाउनलोड द जिप. आपको उसकी जिप फाइल भी पूरी की पूरी गिट की मिल जाएगी. आप यहीं से उसको सारा कोड भी एक्सेस कर सकते हो. जब आपको फाइनली चाहिए आप उसका पूरा जिप भी डाउनलोड मार सकते हो. These are the 2-3 instructions about we could say the sessions. Now let us go ahead. आप जाते हैं थोड़ा सा आगे. We have already covered 2 things over here. हम लोग already बात कर चुके हैं. We have already talked about we could say the concepts of object-oriented programming. We have also talked about what exactly the Java is, how the Java code is going to be executed. Not only that, हम लोगों ने हमारा पहला Java का कोड भी execute करके देखा हुआ है. Now because we have worked with all of this, now it's time to go ahead. एक step आगे जाए and start creating, like we could say some of the classes, start understanding what are the objects. Not only that, also start understanding about something about the main. That means why I said that the main method must be written exactly in the same way. जरा थोड़ा सा ट्विकिंग करके हम लोग उसके अंदर चेक करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what are the different things that we can work around with the main. That means is overloading possible or no. We are going to talk about that.
टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट थिंग दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी कि अगर मुझे यूजर से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है, इफ आई वांट टू एक्सेप्ट सम थिंग्स फ्रॉम द यूजर, हाउ दैट कैन बी डन, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप आज का, because it's going to be the very first day. There are not a lot of concepts that I'm going to bombard it on you. Again, second thing, it's going to be a kind of a demo session. So demo session में we will be trying to cover up few of the basic things out over here. क्योंकि सेशंस को आज मैं एक्सटेंड नहीं करा सकता, so I cannot extend this session a lot more today. जितना हो सके, लाइक whatever the time period it is going to taken up for the next, we could say at least 1 घंटा लगेगा, so that we will be covering it up and then we are going to stop for today. आज के लिए फिलहाल हम लोग रुकेंगे. So let us begin with it. Let us start with the very first thing, that whatever the main that we have created. जरा इससे स्टार्ट करते हैं. Whatever the main earlier that we have created, हम लोगों ने इसको compile भी किया था, execute भी किया था. So let me compile it once again. Java say hello.java and say Java hello, and it gives me the message that it says hello world. But what if, as we know that the main has to be or must be written exactly this way, what if I am going to remove that parameter of string ARR? सर क्या ऐसे चलेगा अगर मैं मेन ऐसे नहीं लिखूंगा तो? Is first the main method writing like this allowed? Yes, allowed to है, but is it going to be the entry point method of my class or is it going to be the entry point method of my project? Answer is no. ये execute नहीं होगा. Let me show it to you and read the error. आप error भी देखो. Let me compile that code once again. Java C hello.java and let me execute it. Java hello. What it says, please read it. Error. It says main method not found inside the class hello. वो कह रहा है कि मेन मेथड है ही नहीं इसके अंदर. और उसके आगे पढ़ो, प्लीज डिफाइन, इट इज सेइंग प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज व्हाट? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इट मस्ट हैव एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. इट मस्ट हैव एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. अगर आप इसको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं दोगे, दैट मींस इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट वेयर द मेन मेथड इज. उसको कंपल्सरी the signature has to be public static void main string array of, or we could say array of strings, compulsory. What if I remove that particular static from here? अगर मैं static remove करता हूं, ये once again check now, once again compile that particular code and execute it. What it says, main method is not static inside the class hello. Please define, once again it is saying same thing, please define the main method as what? Public static void main. यानी कि सर वो स्टैटिक नहीं लिखा तो नहीं चलेगा. सो अगेन इट इज नॉट अलाउड. कंपल्सरी द मेन मेथड हैज टू बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. स्टैटिक से क्या होता है ये हम लोग स्टैटिक के टॉपिक के दौरान देखेंगे. ऑन द थर्ड डे वी आर गोइंग टू हैव द टॉपिक ऑफ स्टैटिक, उस दौरान देखेंगे. बट राइट नाउ इट हैज टू बी, इट मस्ट बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. इसमें से व्हाट इफ आई रिमूव पब्लिक? अच्छा सर पब्लिक रिमूव कर देता हूं. ये लुक एट दैट वंस अगेन, कंपाइल दैट पर्टिकुलर कोड. कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but if you start executing, what it says, main method not found inside the class. अब वो पब्लिक नहीं है, again it is saying the same thing, main method is not found inside the class, please define the main method. यानी कि वो बार बार आपसे कह रहा है कि please define the main method as what? Public static void main. कंपल्सरी इसमें से एक भी चीज, एक भी कीवर्ड, एक भी मॉडिफायर चेंज करके नहीं चलेगा. इट मस्ट बी पब्लिक, इट मस्ट बी स्टैटिक, it must be void, it must be void, it must be having an array of string. सर वो void की जगह पे चलिए काम करते हैं, let us write it as public, but void की जगह पे let me give it as an int and I'm going to say what this main method returns. main method returns is going to be, let's say 1 or let's say 0, जैसे आप C में लिखते हो. Like you write it by saying int main and then you say return 0. So let me save that once again, compile this code. Compilation में कोई problem नहीं है, there's no problem into the compilation, syntactically everything is correct, but is it an entry point function? No. Can you see that what it says? Main method must return a value of type void. It is saying must in the sense compulsory, the main method must return the value of type void inside this class. If it is not void, then that main method will not be called. Is it clear why the main method has to be exactly like this? Or is it clear why the main method exactly has to be like this? Yes guys.
यहां तक क्लियर है? द मेन मेथड, रीजन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, किसी को पता है? रीजन इज पब्लिक टू मेक इट विजिबल आउटसाइड द क्लास, static to call it on the class name, void so that the JVM does not need to handle its return value, and string arguments array so that if we are passing any particular arguments while executing the code, यानी कि यहां से अगर मैं कुछ वैल्यूज को पास करना चाहता हूं, where these values are going to be cached inside that array. This is why the main method is written as public static void main. ये वो रीजन है कि क्यों उसको इस तरीके से लिखा जाता है. अगेन अभी समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया, लीव इट, होल्ड ऑन. जैसे जैसे ये सारी चीजें, यानी कि द मोमेंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स, व्हाई पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी होंगे, व्हाई दिस, व्हाई स्टैटिक, व्हाट इज एग्जैक्टली द एरे, जब ये सारी चीजें आपको समझ आएगी, एट दैट मोमेंट नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाई द मेन इज रिटन लाइक दिस विल मेक सेंस. लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए इफ आई वांट टू राइट अ मेन, हाउ इट मस्ट बी रिटन, इज इट क्लियर टू यू? अभी फिलहाल कैसे लिखना है ये क्लियर है? इसमें से अगर एक भी मिस आउट करोगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, आपका मेन मेथड कॉल नहीं होगा. लेट मी नो, इज इट क्लियर? अरे एवरीवन, इज इट क्लियर सो फार? गुड. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, every time we are not going to write a code over here, we are not going to say compile that by saying java c, execute that by saying java. Can I say this is an overhead for us for writing the java code? अभी के लिए तो ठीक है, बिकॉज इट इज इन वन सिंगल फाइल, बट जावा का कोड कभी एक सिंगल फाइल में होता ही नहीं है. whenever you are going to write a java code, java has a concept of something called as packages. Not only that, into the packages it has a concept of creating multiple classes. Now because of which compilation of the java code, execution of the java code, it becomes too complex. Now let me tell you, or let me show you, instead of telling you, let me show you what complexity it brings me to the table. Whenever you talk about the java code, you might have seen that both the code has been kept, that means even the source code and even the compiled code .class file is kept inside the same directory. Now java does not recommend doing it in this way. java कहता है कि ऐसा करना ही नहीं है. This is the worst way of programming. If you want to create that java, if you want to create that particular, we could say, a program for a java, it must be created as a project. That means it should have a proper directory structure. That is what the java recommends. Now let us write the same code as per the java's convention. java जिस convention में कहता है, उसी convention में हम लोग यहाँ पे code करने वाले. And let us understand the challenges that we face while creating that code, while compilation and for execution, and the steps that we need to carry out, so that we can understand what's the alternative solution for it. So let us begin with it. I'm going to say there's going to be one command line demo that I'm going to create. So here I'm going to create one project. So maybe I can say, let me clear that page. Go over here. Please notice it. Inside the day1 itself, इसी day1 के अंदर एक मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. फोल्डर का नाम मैं रखने वाला हूँ कमांड लाइन. What's the name of the directory? Command line. So command line के through I'm going to execute the Java code. That means I'm going to create a proper project of a Java that is created from the command line, not from any IDs, but from a command line. Inside this, there are going to be two more directories. One called as an src and another one called as a bin directory. Now, why like this? Let's understand it. Whenever you create a Java project, and this is what the Java recommends. Whenever you create a Java project, Java says give a proper name to a directory. That means create a directory and give a proper name to the directory based on the given project. जैसे मैं जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूं, the name of the project is going to be the command line. ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है. So this command line project must have, this is what Java says, must have these two directories within it. उसके अंदर ये दो डायरेक्टरीज होनी ही चाहिए. One is going to be called as the source directory, and another one is going to be called as a bin directory. The source directory must have all the .java files. इस source directory में क्या होना चाहिए?
it must have all the .java files. It is nothing but the source code. ये सारे all java files, इसका मतलब ही क्या है? That it must have the source code. इसके अंदर source code होना चाहिए. And the bin directory must have all the .class files. उसके अंदर क्या होना चाहिए? सभी .class files in the sense the compiled code. यानी कि जावा कहता है कि डू नॉट कीप एवरीथिंग इन जस्ट वन सिंगल डायरेक्टरी. नो, whenever you are going to store that entire 𝐿𝐴 code, it must be kept inside the project folder. एक प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रखो. Inside these two directories, one is src and another is bin. src stands for the source code, bin stands for the compiled code. In src, all the .java files should be kept. In bin, all the .class files should be kept. सारे .class files यहाँ पे रखनी चाहिए. Now, how these things can be kept? या हम लोग रखें कैसे? क्या मैन्युअली उस डॉट क्लास को उठा कर रखेंगे? No. Now, please observe how it is going to be done. Inside the source code, look at that. Inside this source code, I am going to create one particular file. एक फाइल में क्रिएट करने वाला हूं. Please observe, मैं सारा कमांड लाइन के थ्रू कर रहा हूं. Everything I am doing it through the command line. The name of the document is going to be, like me could say, this is going to be my first file, where I will say this is going to be first.java. Look at that. Is it a Java file that has been created? Yes. Now inside the first.java, I'm going to create a particular main, यानी कि class में create करने वाला हूँ first नाम से, and I'm going to write the code inside. So let me open that particular file. File को करते हैं open यहाँ पे, and let me say there's going to be a class called as a first, and inside it we are going to have a main. इस main के अंदर I'm going to write one message where I'm going to say this is my first class from, we could say, command line. Just a simple message where I can say this is going to be the main that is executed from the first class, and it is from the command line. Whatever this has been created, I want to compile it, I want to execute it. मुझे इसको compile भी करना है, मुझे इसको execute भी करना है. Now for that, I have to go inside this src directory. Right now I am inside this day1. मैं day1 के अंदर हूँ. How do I go inside it? You can say cd, उसके आगे day1 के अंदर जो भी डायरेक्टरी का नाम होगा, कमांड लाइन स्लैश, कमांड लाइन के अंदर we have something called as src. Please look at that. Am I inside that command line src directory now? Yes. See the steps that I need to follow. ये जरा steps को notice करो, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है. So I just want to execute this simple statement. एक simple सा statement को execute करना है. But look at the steps that I need to follow. First step, do we need to compile the code? ये पहला स्टेप. क्या हमें यहाँ पे कंपाइलेशन करना है? यस. कैन यू टेल मी द कंपाइलेशन स्टेप? कंपाइलेशन का स्टेप क्या है? जावा सी. हाँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टेप? जावा सी. अभी भी कहा था सुबह, जावा सी एंड द नेम ऑफ दैट डॉट जावा फाइल. व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉट जावा फाइल? फर्स्ट डॉट जावा. व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉट जावा फाइल? फर्स्ट डॉट जावा. लुक ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे नोटिस करो, देयर इज जस्ट वन सिंगल फाइल, फर्स्ट डॉट जावा. द मोमेंट आई हिट एंटर, जैसे मैं हिट एंटर करता हूं, it is going to compile it and it will create a dot class file right over here. उसने dot class file create कहाँ पे किया? Where the dot class file has been created? The dot class file it has created right within the same directory, within the src directory. But I don't want it inside the src. मुझे src में नहीं चाहिए. Where do I want it? Inside the bin directory. ये मुझे चाहिए कहाँ पे? Inside the bin directory. It has created it inside the src. उसने क्रिएट किया src के अंदर. How do I create it inside the bin? Let me delete that. Delete करो उसको. I want to compile that code and I want to make sure that it is available inside this bin directory. यहाँ पे वो बनना चाहिए. Now for that, while compilation, look at that. While compilation, you have to tell him that where that directory is. Where that directory is, where do you want to keep that dot class file? So you have to say javac -d. -d stands for the directory. The directory where you want to keep those dot class files. So I'm going to say -d and give the path to the directory. Give the path to the directory, and that's going to be the relative path. यानी कि current directory से कहाँ पे? Right now you are inside this src. अभी फिलहाल आप कहाँ पे हो? src के अंदर. So say dot in the sense, go to the parent directory, go inside this command line. उस command line के अंदर there's a directory called as a bin.
वहां पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है bin. Keep it inside this bin directory. You notice it on the left hand side. कमांड लाइन के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है? bin. आई एम सेइंग कीप इट इनसाइड दिस डायरेक्टरी. एक कौन सी फाइल रखना है? विच फाइल डू यू वांट टू कीप? सो यू आर गोइंग टू कंपाइल दिस फाइल कॉल्ड एज अ फर्स्ट डॉट जावा और सिर्फ डॉट क्लास फाइल आप वहां पे रखोगे. Once again, look at the command. The command says javac compile, keep it inside a directory. The directory is called as a bin directory. And which dot class file you are going to keep? The dot class file created from the given dot java file. The dot class file created from the given dot java file. I'm going to say keep it inside the bin. This is the first command that you need to use now. Let me copy that. Let me keep it over here. So what are you going to say? javac -d /bin. This is going to be the first dot java. इसके अंदर क्या है? Once again, all the commands are going to be given from the source directory. ये सारे commands आपको source directory से देने हैं. इस source directory में आपने क्या create किया हुआ है? First dot java file. What you have created is the first dot java file, and this is the command that you have given from the src. ये जहां पे मैं लिख रहा हूं वहां पे ये command दिए जा चुके हैं from the src directory. Hit enter and please check on to the left hand side. bin में क्या होता है check करो. The moment I am going to give this command, hit enter, it has created a dot class file inside this bin directory. उसने क्या create किया? What this command is doing? This command is going to create the first dot class. This command is going to create the first dot class inside the bin directory. ये आपके bin directory में ये dot class file create करेगा. This is what it is going to create. Now I want to execute this code. Execute करने के लिए command क्या है? Execute करने के लिए command क्या है? If I want to execute, what's the command that we have used? It's Java. It's Java and the name of the dot class file without the extension. Name of the dot class file without the extension. अरे ये already हम लोग को लिखा हुआ है कहीं पे तो. Let me show it to you. Can you see that? To execute the dot class file, use the below command. How will you execute? Java and the name of the dot class file. So exactly the same thing that I'm going to use it over here. Same चीज यहाँ पे use करने वाला. I'm going to say Java and this is going to be the first dot whatever. Sorry, the name of the dot class file that is going to be the first. Extension use नहीं करना है. So when I say Java first, hit enter. Please observe. Hit enter. What it says. Read the error correctly. What it says. It is saying could not find or load the main class. Class not found exception. Is it not able to detect that class? Answer is no. The reason is you are giving the command from this src. आप execute कहाँ पे कर रहे हो? src से. यानी कि आप execution के लिए command यहाँ पे लिख रहे हो. You are writing the command over here. Java. This is going to be the first. अरे लेकिन first dot class file is it present inside this src or is it kept inside the bin? अरे वो रखा कहाँ पे है? Where the dot class file is? Is it kept inside the source code or we could say source folder or is it inside the bin directory? It's right now inside the bin directory. So if it's in the bin directory, you have to tell this Java where the first dot class should be searched. उसको search किया कहाँ पे जाना चाहिए? By default वो search करता है within the current directory. By default the searching is done inside the current directory. उसी को वो कहता है class path. This is the same thing what it is called as a class path. Class path. Look at that. Class path is a variable, is a Java's environment variable that is used to define the path where the dot class files are kept. Right now, if you look at the set class path, it says the environment variable is not defined. That means आपने अभी तक इस environment variable को किसका environment variable? Java के environment variable को जिसका नाम क्या है? Class path. What is the class path? The path to your dot class files. इसको आपने अभी तक सेट नहीं किया है. What it says when I look at set class path, वो कह रहा है कि अभी तक ये variable defined नहीं है. So whenever you want to tell him all your dot class files are kept into a different path, यानी कि वो bin में रखे गए हैं, so to tell it to the Java, you have to set this class path. कि आपको क्या करना पड़ेगा? You have to set this class path. So first you have to say set class path
is equals to, again you can give the relative part to it, from the current directory. Look at that, from this src go back and you are going to get the bin directory. So tell him all the dot class files are kept over here. While while compiling, have you used the same thing? कंपाइलेशन करते वक्त क्या आपने यही चीज इसको बोला था कि where the dot class file should be kept, dot dot slash bin, tell him the same thing कि सारे क्लासेस रखे गए हैं कहाँ पे, inside this dot dot slash bin, everything is kept inside the bin directory. Hit enter, इसको enter hit करो and the path has been set. जरा जाके चेक करते हैं ये set class path, प्लीज चेक what it says now. पहले set class path पे क्या बोल रहा था, environment variable class path is not defined. But if I check now set class path, what it says? It says the class path is equals to dot dot slash bin. That means अब उसको पता है कि वो dot class files कहाँ पे. Now when we were earlier executing it Java first, it was giving me error by saying class not found exception. Now I'm doing the same thing by saying once again this is going to be the Java first. Hit enter. Is it saying first class from command line? Are we able to execute the code now? Yes. कहां से execute कर रहा हूं? Everything from the src. ये सारा चीज मैं कर कहां से रहा हूं? So everything I'm doing it from the src. So when we are going to say Java first directly, अगर आप directly कहोगे तो आपको error आएगा. तो इससे पहले आपको करना है class path को set. So to set the class path, say set class path. Set class path is equals to dot dot slash bin. You're going to say set class path is equals to dot dot slash bin, and then finally you're going to give the command by saying Java. This is going to be first. These are the 3 steps that you need to follow it, that you need to create it, sorry, that you need to execute it from the src. From the src से ही आपको उसको execute करना है. Let me know, are the 3 steps clear? Compilation के दौरान tell him that put that particular dot class file inside the bin directory, set the class path to the bin directory, and then you can start executing those code. Is it clear how the directory structure has to be created? पहले directory structure कैसे create होना चाहिए ये clear है? Is it clear? थोड़ा समझ आ चुका है? आप यहां से कुछ भी काम नहीं करने वाले, believe me. So this is not the way that we are going to do, but this is the older, very old way जब IDs का existence नहीं था. Understand it? When the IDs did not existed, at that time people used to write the code in the editors like this, and they used to compile the code by themselves exactly in the same way. Now because of the IDs, it has become more simple. बस एक बटन क्लिक करना है and it is going to work for you. But हाँ, उससे पहले यहाँ तक क्लियर है? Have you understood this much? थोड़ा सा समझ आ चुका है? I'm not even saying 100%. ये करके देखना पड़ेगा. Once you do it 1 or 2 times, you will be comfortable. Don't worry on it. लेकिन समझ आ चुका है बेसिक. हाँ, very good. Now let me show it to you how we are going to work with it. क्योंकि ऐसा अगर हम लोग करेंगे, if every time we are going to compile this code, तो बस हमारा कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में ही टाइम चला जाएगा. When are we going to understand the rest of the concepts? And that is why we need this entire thing to be automated. मैं चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने देखी, that we have to go over here, we have to add that particular command. So ये ना करते हुए I want this entire thing to be automated. And this is where I will be using some of the IDEs. Can you tell me what is an IDE? Full form, at least full form तो बताओ. Do you know what is an IDE? Integrated Development Environment. It is called as Integrated Development Environment. यानी कि आपके डेवलपमेंट के लिए ये पूरा एनवायरमेंट आपको बना के दे देगा. That means that environment is going to be given just for the specific development. Specific development in the sense, अगर आप Eclipse के पास जाओगे तो स्पेसिफिक जावा डेवलपमेंट के लिए बना है. अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के पास जाओगे तो वो स्पेसिफिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है. तो ऐसे कुछ आइडियाज होते हैं जो स्पेसिफिक एक टेक्नोलॉजी या फिर एक लैंग्वेज के लिए बिल्ड किए जाते हैं. So these are generally called as IDEs, Integrated Development Environments, the environments that are provided for the specific technologies.
So what we are going to do is we are going to like use an ID over here. So there are now multiple IDs that are available into the market. मार्केट के अंदर ऐसे मल्टीपल आईडीज हैं जो कि अवेलेबल है, out of which you can use any one of it. The ideas like you can go for the very first and very popular ID that you might be knowing is something called as the eclipse. Something called as the eclipse. The second one that we have is kind of we could say called as an STS. STS stands for Spring Tool Suite. So अगर आपको जावा को यूज करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ काम करना है, to work with the spring framework, that's a very beautiful idea that is present. It is called as a spring tool suite. तो आप उस STS को भी यूज कर सकते हो. Or maybe you can go for the third one, which is again one of the best ID to work for the core Java. It is called as the IntelliJ idea. So you can go for this third type of an ID. तो ऐसे मल्टीपल आईडीज मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो. दैट्स नो प्रॉब्लम फॉर इट. Specifically right now I'm going to start with an STS. The reason for this, Eclipse ये सिर्फ जावा का पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है. एडवांस जावा के बेसिक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट्स, मेवन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है. बट फॉर अ स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स this ID lacks a bit because it does not have the components that are required for the frameworks. It needs to be added externally. That's why STS is a better thing for it. On top of that, if your advanced Java is not the priority, only the core Java is the priority, or maybe you want to learn something called the Kotlin over here, आगे जाकर के आपको Kotlin वगैरह सीखना है, then I would recommend you should go for IntelliJ idea. Now to come in between, यानी कि यहाँ पे जितने भी students है, they might be going for advanced computing, they might be going for we could say mobile computing, or they might be reaching out to different we could say domains out there. Or maybe there are few people who might be willing to learn the Spring Boot later on, the next modular batch that is going to happen into the next month. तो जिसको अगर Spring Boot वगैरह करना है, so for them I will be sticking to this STS. तो मैं STS के पास जाऊंगा so that the ID is going to remain common for the rest of the things. So going to an STS, आप यहाँ पे STS को open कर सकते हो. This is going to be Spring Tool Suite. Now this needs to be installed in the sense this needs to be extracted first. यानी कि मिलेगा कहाँ से? From where I'm going to get this particular STS. Go on to the we could say browser and just search for Spring Tool Suite. Just search for Spring Tool Suite. So you can go for the first thing, Spring source के अंदर you can just click on that और उसका जो भी version आपको चाहिए, so you can go for that particular version. यहाँ पे जाकर के आप Eclipse के ऊपर क्लिक करके you can just download it for we could say Windows. Do not go for Visual Studio Code or we could say Cursor, यानी कि उनके tools के साथ मुझे वो ID नहीं चाहिए. I want it where it is built on top of Eclipse. Eclipse के ऊपर जो build हुआ है, so this is the exact editor that we are going to get, or we could say an ID that we are going to get. तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर दो. So whichever the operating system that you have, whichever the architecture that you have, you can go for it. जैसे for example, if I'm onto the Windows, I'm going to choose that Windows. Click on that, and it is going to download a zip file for you. एक zip file आपको डाउनलोड करके देगा. That zip has to be extracted. उस zip को बस आपको करना होता है extract. जैसे for example, with me inside the softwares, I have got this multiple versions of STS. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, STS 3.9, STS 4.19, STS 4.30, ये जो है वो अलग अलग we could say STS के वर्जन है जो मैंने डाउनलोड किए थे ओवर द पीरियड. आप जैसे जिप फाइल डाउनलोड करोगे उस जिप को एक्सट्रैक्ट करो. द मोमेंट यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट, आपको कुछ ऐसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू आर गोइंग टू हैव दैट डायरेक्टरी विच इज STS, दिस इज द वर्जन ऑफ इट, और उसके अंदर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी. इट इज गोइंग टू बी स्प्रिंग टूल सूट 4.exe. ये जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो. यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट and it is going to open that particular we could say STS. आपके लिए STS वो open करके दे देगा. So simple, nothing explicit installation is required. Just make sure that you have downloaded and you have extracted that particular file. बस download करो, extract करो, and you have that file with you. उस फाइल को यूज करो, and using that particular file, that means Spring Tool Suite 4.exe file, just double click on it and it is going to start with the project. जो भी ये क्रिएट कर रहा है, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन इट. आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन से पिन टू द टास्क बार सो दैट एवरी टाइम यू डोंट हैव टू ओपन द फोल्डर. हर बार फोल्डर ओपन करके डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू से क्लिक ऑन दिस STS एंड इट इज गोइंग टू ओपन. यहाँ पे सीधा वो ओपन कर देगा आपके लिए. Whatever this STS is going to be launched, ये जैसे ही लॉन्च होगा, the first thing that it is going to ask you is to create a workspace. सबसे पहले बोलेगा कि वर्कस्पेस क्रिएट करो.
वर्कस्पेस इज अ प्लेस वेयर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड। ये वर्कस्पेस एक ऐसी जगह होगी कि जहां पे आप हर दिन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल in my case we are going to be inside this modular batch, inside this CJA team, that means आपका जो batch है वो, and inside it today is day one, that's why inside this day one I'm going to create those projects. Select that folder. Please observe once again, inside that modular batch, inside the CJO team, inside this day one I'm going to create multiple projects. कल अगर डे टू होगा सो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू डे टू, परसों डे थ्री होगा चेंज टू डे थ्री, उसके बाद डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, यानी कि हर एक दिन के ऊपर वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। तो कौन से डायरेक्टरी में आपको वो सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, डू नॉट फॉरगेट टू चूज दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो जैसे मैंने डे वन को चूज किया है, क्लिक ऑन लॉन्च एंड इट इज गोइंग टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर एसटीएस पॉइंटिंग टू द गिवन वर्क स्पेस। So let it open. Hold on for it. थोड़ा सा we could say it is bit kind of a laggy. थोड़ा सा laggy है, heavy नहीं है, but थोड़ा सा laggy. That's the only reason. Do we need to compulsory use STS ID or we can do with VS Code? No, VS Code के साथ मैं recommend नहीं करता हूँ sir. The reason is VS Code is an editor. वो एक editor है, and editor के अंदर we do not have the exact support of packages and everything that we need it to work onto the Java as comparatively with the STS. The similar behavior cannot be observed over there. और वहां पे काम करते वक्त प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लुक्स वेरी पैथेटिक, मतलब बहुत ही घटिया दिखता है, because the STS is having a way more beautiful feature of showing the packages in a single line. Not only that, compilation and execution is also way more simpler. Execution happening onto the console is also very cleaner and smooth as compared to the VS Code. VS Code पे ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकदम से ऑड वे से दिखता है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे द बिन एसआरसी द कमांड लाइन द प्रोजेक्ट्स दैट आर एबल टू सी, ये कहीं ना कहीं धीरे 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 जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे ये दिखने में भी काफी एकदम बेकार दिखता है। VS Code is way more popular for the frameworks that if you want to work with is either going for we could say the React or maybe I could say the Express web development के लिए it's one of the best ideas. JavaScript, HTML, CSS, JavaScript करने वाले it's way more best we could say editor that is available into the market. हाँ, लेकिन Eclipse के लिए ये नहीं बना है, Eclipse के लिए मजा नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, इफ यू रियली वांट इट यू कैन स्विच टू समथिंग कॉल्ड एज इंटेलिजे। आई डू रिकमेंड दैट, आप इंटेलिजे के पास जा सकते हो, बट इंटेलिजे का प्रॉब्लम ये है कि वहां पे इंटरप्राइज का अगर आपको जावा का कोई काम करना है तो दैट्स अ पेड वर्जन जो आपको मिलता है। इट्स काइंड ऑफ फ्री ट्रायल आउट देयर, फ्री ट्रायल इन द सेंस इट इज अ काइंड ऑफ आईडी, द कम्युनिटी आईडी वेयर यू कैन जस्ट काइंड ऑफ डू द कोर जावा एंड द कोटलिन पार्ट इनटू, तो आप वो कर सकते हो। तो इंटेलिजे इज वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग दैट इफ यू वांट टू गो फॉर, अगर आपको स्मूथ आईडी चाहिए तो, बट एसटीएस विल बी द बेस्ट थिंग। अगर कोई एडवांस जावा या फिर स्प्रिंग बूट किसी को करना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन रीच आउट। हाँ, करना है तो वीएस कोड के ऊपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लुक एंड फील वाइज दिस लुक्स बिट बेटर जावा के लिए अगर पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो। फाइन, बातें करते करते यू माइट हैव सीन दैट द एसटीएस हैज ओपन। जितने भी अननेसेसरी विंडोज है आप उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो। यू कैन जस्ट मिनिमाइज दोज विंडोज एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। Look at that how the project looks like now. Earlier we have created a directory called as a command line. अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो command line नाम का एक डायरेक्टरी था। command line से src bin नाम की डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट की थी। We had created that directory. Look at that src and bin. Inside the src we have created that first.java. Now whatever we did it inside the command line, the same thing I want to do it into the STS. And for that you have to compulsory say, look at that. Now notice it, what are the different things that you get while working with this ID. Go into the file and say new, that's going to be a Java project. यहाँ पे जाके लिखना है file new, that's going to be the Java project. Inside this Java project, give the name to it. एक name यहाँ पे दे दो. So I'm going to say the name is going to be demo01. नाम कुछ भी हो सकता है. The name can be anything. You are just going to give demo01. You notice it. It also asks you, do you want to choose an execution environment for it? जो हमें VS कोड में ये ऑप्शन नहीं मिलता है,
देयर वी हैव टू डू इट थ्रू द कमांड लाइन, हमें कमांड लाइन से उसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ अलग वर्जन पे इसको कंपाइल करना है। हियर यू कैन जस्ट चूज इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन कि आपके पास जितने भी वर्जन्स है जावा के, यानी कि अभी फिलहाल मेरे पास 21 है, तो 21 के नीचे जितने भी वर्जन्स जावा के, उन जावा के वर्जन्स के लिए मैं इसको कंपाइल कर सकता हूं। आई कैन कंपाइल इट फॉर द ओल्डर वर्जन्स ऑफ जावा, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जेडीके ही 21 है, तो 21 के अंदर जितने प्रीवियस वर्जन का सपोर्ट रहेगा वो सारा कंपाइलेशन यहाँ पे हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू से जावा एससी 1.8। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को भी चूज कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इट इज गोइंग टू टेल यू दैट आई विल बी क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी लाइक दिस। मैं एक्चुअल में डेमो 1 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके अंदर एक एसआरसी नाम की डायरेक्टरी होगी। And again, you are not creating any directories. This IDE is automatically creating that directory for you. उतना ही नहीं, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक करोगे, can you see that default output folder? That means when the code is going to be compiled, तो compilation के बाद वो डॉट क्लास फाइल जाएगी कहाँ पे? Inside the bin directory. And ये both the directories, whether the source directory or whether the bin directory, is going to be created automatically for you. यानी कि जो मैं इनिशियली मेहनत कर रहा था, क्रिएट द फर्स्ट फोल्डर, क्रिएट द सेकंड सोर्स एंड वी कुड से बिन डायरेक्टरीज विद इन इट, तो वो सारा चीज बस राइट क्लिक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर करने के बाद ही सब कुछ मिल रहा है। वी जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश के ऊपर क्लिक करो एंड लुक एट दैट, लुक एट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेक करो। वी हैव दिस डेमो 01, फिजिकली चेक करते हैं, डू वी हैव दैट डेमो 01? फिजिकली चेक करते हैं, इनसाइड इट, inside the day 01, do we have that demo 01? Yes. Demo 01 के अंदर क्या how many directories आता है? Once again, bin and src. src के अंदर क्या जाएगा? source code. bin के अंदर क्या जाएगा? we could say dot class file. Is it clear? जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे, the same directory structure has been created, but who is creating it? Now the sts is creating it for me. Who is creating it? The sts is creating it for me. Now check, अब यहाँ पे चेक करते हैं। I want to see what is there inside this demo 01. ये क्लिक करो, ये दिखा कि SRC 1 सेकेंड। Not only that SRC, वो मुझे ये भी बता रहा है that this project is already using that JRE. Can you tell me what is JRE? JRE का फुल फॉर्म बता सकते हो? Can you tell me the JRE's full form? JRE का फुल फॉर्म क्या है? अरे अभी भी देखा सुबह। JRE stands for Java's runtime environment. It consists of two things. Which are the two things? It consists of two things. Which are the two things? rt.jar and JVM. फिर runtime की jar और JVM होता है। Now the JVM is fetched by default by this STS. उस STS ने उस JVM को by default fetch करके रखा है for execution. और जो रन टाइम की जार है, the one that we are talking about, can I say उसको as a modules अब बनाया जा चुका है into the newer versions of Java. ये मैंने दिखाया भी सुबह सुबह, JMods. We talked about the JMod. JMod stands for Java modules. तो उन मॉड्यूल्स के अंदर सभी डॉट क्लास फाइल्स को रखा जा चुका है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर उन डॉट क्लास फाइल्स को रखा जा चुका है। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर व्हाट डू वी हैव आर ऑल दीज पर्टिकुलर मॉड्स। ये मॉड्स और कुछ नहीं बल्कि अर्लियर सारे जार्स थे, जो पहले जार्स कहा जाता था, अब यहाँ पे कहा जाता है मॉड्स, मॉड्यूल्स। उसमें से मैंने कहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ जावा बेस। उस जावा बेस को अगर आप चेक करोगे, एक कैन आई से वी हैव ऑल द पैकेजेस, ये जो दिख रहा है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज द पैकेजेस। और उन पैकेजेस के अंदर देयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैकेज कॉल्ड एज द java.lang। अगर आप इसको ओपन करोगे, व्हाट डू वी हैव आर ऑल द डॉट क्लास फाइल। कैन यू चेक दैट? इनका सभी का एक्सटेंशन चेक करो, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल डॉट क्लास फाइल्स। डॉट क्लास फाइल्स इन द सेंस all the Java code that is already compiled for you. Compiled code आपको दिया जा चुका है, and this is what is present inside that runtime jar. यानी कि ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस, ऑलरेडी उनके अंदर के सभी मेथड्स आपको बाय डिफॉल्ट बना के दिए जा चुके हैं।
so that now you can use them and you can start coding directly into the Java. कि जैसे अगर आपको हेलो वर्ल्ड भी लिखना है तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम क्लास था वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया जा चुका है. सो यू कैन सर्च फॉर इट एंड यू बी एबल टू सी समथिंग कॉल्ड एज अ सिस्टम डॉट क्लास. यानी कि जितने भी क्लासेस आप यूज कर रहे थे, whatever the hello world that you are writing, so for that the use of system class that you are able to use it because the class was already defined for you, वो already यहाँ पे define हो चुका है. So this is what the rt.jar is or the runtime jar is, where it has kept all the core libraries that are used for the development. तो जितने भी libraries चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे हैं. You can use it from this. Let me know. Is it clear what the IDE is doing now? IDE is creating an environment for you for the execution. यानी कि उसने Java runtime environment को साथ में लेके आ चुका है for this project, जिसके अंदर आपका पूरा कोड, the code that you're going to write inside the SRC is going to execute. चेक करते हैं whether it is executing or no. चेक करने के लिए I'm going to right click on SRC, say new, that's going to be a class. हर एक मेथड जो आप करने वाले हो, हर एक मेन मेथड जो आपको क्रिएट करना है, it has to be created inside a class. So I'm going to say right click new, there's going to be a class. Class का नाम जो आपको देना है आप दे सकते हो. So right now I'm going to give the name of the class as once again first. Do you want the main method inside it? क्या आपको main चाहिए? तो यहाँ पे जाओ, just check mark tick करो. So yes, I do want that public static void main. Just tick that, click on finish and tell me. Are we having the class that has been created over here, which is going to be class first and the method is main? अभी देखते हुए थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह आपको लग रहा होगा कि like this font is very too small. Again we are going to increase that font, but how do I increase it? उसको मैं increase करूँ कैसे? So for that you can go inside the window. आप विंडो में जा सकते हो, प्रेफरेंसेस में जा सकते हो, and you can say that's going to be the font, colors and font. Inside the colors and font, inside the basic, go for the text font, change it to something like 20 bold, click on apply and close, and this is what do we have is a main method. Inside this main method, I'm going to say system.out.println. Inside this system.out.println, I'm going to say hello, or maybe I could say hello from STS. Hello from STS. The moment I have written this code and I have saved this file, मैंने सिर्फ सेव किया है फाइल को, मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ सेव किया फाइल को. The moment I have saved this file, जरा चेक करो क्या हुआ. Go inside the directory structure. Go inside the directory structure, and inside this directory structure, inside the SRC, what do we have is the first .java. जैसे मैंने उस फाइल को सेव किया, the moment I have saved the file, check inside the bin directory. Is the .class file been created? यानी कि मुझे कंपाइलेशन का स्टेप लिखना ही नहीं पड़ा. आई डोंट इवन हैव टू से जावा सी. जैसे ही फाइल को सेव करता हूं, द मोमेंट आई वांट टू सेव दैट फाइल, इज दैट डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. ये बन चुका है. अगर डॉट क्लास फाइल बन चुका है, कैन आई एग्जीक्यूट दैट डॉट क्लास फाइल? यानी कि क्या मैं उसको एग्जीक्यूट करा सकता हूं? यस. हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट? उसको एग्जीक्यूट करूं कैसे? डू आई हैव टू से लाइक वंस अगेन गो इनसाइड द डायरेक्टरी, सेट द क्लास पाथ? नो, यू डोंट हैव टू सेट एनीथिंग. जस्ट यहाँ पे एक बटन है रन का. Can you see that? There's a button to run that. So say run on that. Yeah, how do you want to run that? Do you want to run it as a Java application? Yes, I want to run it as a Java application. Click on OK and check. Are you getting the output? Is it simpler for you to create those projects in STS now? You tell me which is better. Is STS being better? Or is it better from doing it from the console-based application like that? आपको क्या लगता है? Take your time and then tell me. Which is better? STS is way more better. Yes, I know that. नहीं, जब हम लोग पैकेजेस के वगैरह पास जाएंगे, when we are going to have even more packages, you'll find it out कि STS is way more better. पैकेजेस के एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा, VS कोड से भी करके दिखाऊंगा, यहाँ से भी करके दिखाऊंगा. You'll understand it. Why generally it is recommended to go for an IDEs while working with Java. मैंने 3 IDEs ऑलरेडी बता के रखा है. एक तो Eclipse के पास जाओ, STS के पास जाओ, या फिर IntelliJ के पास जाओ.
These three IDs are way more better. Okay. Simple with this. So far, is it clear? ठीक. Now, today we have completed क्या क्या चीजें पहले कंप्लीट की, पहले उसके बारे में देखते हैं. लास्ट पॉइंट एक छोटा सा बचा हुआ है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. But before that, let us talk about what are the things that we have completed. First, installation. Is installation clear to you? Installation clear है, क्या क्या करना है? Installation में दो installations है. पहला installation, download and install JDK, and we could say download and extract STs. So पहले इंस्टॉलेशन में आपको दो चीजें करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है जेडीके को. सेकंड, यू हैव टू डाउनलोड एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द एसटीज. पहला. सेकंड, वी हैव अंडरस्टूड द एग्जीक्यूशन फ्लो. You have understood the execution flow, how the Java is going to execute it. यानी कि जावा को जब कंपाइल करोगे, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन. कंपाइल करोगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट डॉट क्लास फाइल, और फिर उस डॉट क्लास फाइल को आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द डॉट क्लास फाइल. नेक्स्ट एग्जीक्यूशन फ्लो के बाद वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स ऑफ ओपी. हम लोगों ने ओपी के कंसेप्ट्स के बारे में देखा कि व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट्स आर, व्हाट आर द मेजर पिलर्स, व्हाट आर द माइनर पिलर्स. मेजर पिलर्स के अंदर वी हैव अंडरस्टूड एब्स्ट्रैक्शन, encapsulation, modularity, hierarchy. Minor के अंदर we have understood polymorphism, persistence and concurrency. Last, we have understood about, we could say, the steps, or we could say steps for compilation and execution from command line एंड एसटीज. आप लोगों ने ये भी देखा कि लाइक कमांड लाइन के थ्रू अगर मुझे करना है सारा कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इनटू द मल्टीपल, दैट टू स्टेप्स फॉर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इन एसआरसी एंड बीम फ्रॉम कमांड लाइन एंड एसटीज. And last, we need to now at least accept some values from user. यानी कि यूजर से कुछ वैल्यूज को अब मुझे एक्सेप्ट करना है, एंड आई वांट टू डिस्प्ले दोज वैल्यूज टू द यूजर वंस अगेन. तो मे बी मुझे दो नंबर्स का इनपुट लेना है यूजर से. आई वांट टू डिस्प्ले द एडिशन ऑफ दोस टू नंबर्स इनटू द आउटपुट. ऐसा कुछ तो काम काइंड ऑफ मुझे आप थोड़ा सा यहाँ पे करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सो लेट्स गो इनटू द प्रोजेक्ट वंस अगेन, एंड लेट मी से that I want to close this demo 01. देखो मैं यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ. डेमो 01 जो बना हुआ है, let me close that particular project, and let me say there's going to be one more directory, one more Java project that we have. It is going to be demo 02. That's a simple demo 02. Inside this demo 02, there's going to be a class. Once again a class. We are going to call it as a program 01. या आप नाम कुछ भी दे सकते हो, क्लास का नाम जो चाहिए वो दे सकते हो. I'm going to say the name of the class is going to be, sorry, not program 01, it's going to be the program. Inside this program, we need a main. Click on finish, and we have a class जिसका नाम है program, जिसके अंदर मेरे पास है main. I want to accept two numbers from user. मुझे दो numbers को यहाँ पे accept करना है. Now, whenever you need to accept two numbers, you need to create one object of a class called as a scanner. ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज अ स्कैनर. स्कैनर नाम का एक क्लास यहाँ पे पैकेज यूटिल के अंदर प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पैकेज कॉल्ड एज अ यूटिल. तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वे अंडरस्टैंड करो. अगेन अंडरस्टैंड इट एज अ सिंटैक्स. उसको एज अ सिंटैक्स ही पहले समझो. जैसे हमारे क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस का टॉपिक खत्म होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्यों लिखा गया है. बट होल्ड ऑन फॉर इट. कंपल्सरी यू हैव टू से scanner sc is equals to new scanner system dot in. ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, उसको system dot in ही क्यों पास किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी.
अगेन आई एम सेइंग वेट फॉर कंप्लीटिंग द डे 2 तक कंप्लीट होते होते आपको इसका आंसर मिल जाएगा. Right now, I'm going to say scanner SC is equals to new scanner system dot in. What we are creating is an object of scanner class. Okay, what we have created is an object of a scanner class. Scanner class का object create हो चुका है. Now, whatever this object that has been created, that object can be used to scan some inputs from user. जैसे आप यूजर को एक मैसेज पहले दे दो, system dot out dot println. आप एक मैसेज दे दो यूजर को and you say enter the number 1. आपने कहा यूजर से कि नंबर 1 को एंटर करो. now user is going to enter something onto the console. वो 10 20 30 कुछ तो एंटर करेगा. whatever you have entered you are going to scan it. स्कैन करने के लिए you have to say sc dot next int. sc dot next int. Next int in the sense you are saying whatever is available the next thing onto the console that is going to be an integer value, scan it. Float होगा तो say next float. अगर डबल होगा तो next double. अगर let's say string होगा तो next. So whichever type of data that you're going to pass from the console, now for that type of data you should be calling the similar method from the scanner class. Scanner class का object बन चुका है. Method का नाम है next int which will give you the entered integer value. वो आपको entered integer value लाके दे दे. Exactly the same way I want to accept the second number. To accept the second number you are going to say repeat the same statement system dot out dot println. Out dot println. What are you going to accept? You are going to accept the second number. So say enter the num2. Whatever the number that it is going to enter, जो भी number enter करेगा, you can say n2 is equals to sc dot next int. What we have done is like we have tried accepting two numbers from the user. अब इन दो numbers का करना क्या है? Let's say मुझे result का calculation करना है. Integer result is equals to we could say n1 plus n2. और result को मुझे show करना है. To show that you are going to say addition is equals to. You are going to say addition is equals to. ये मुझे addition मिलेगा कहां से? From where I'm going to get that addition? n1 plus n2. यहाँ पे result मुझे मिल चुका है. How do I display that result over here? If I want to concatenate any string with a dynamic value, use plus operator. Use plus operator. तो जावा में println के अंदर किसी भी string value के साथ अगर आपको कोई भी वैल्यू को अटैच करना है, if you want to attach these two values, then you have to use the plus operator. Plus operator is used to concatenate string with any value. Plus operator is used to concatenate string with any value. तो concatenate करो, string के साथ अगर plus यूज करोगे तो वो concatenate ही करेगा. Concatenate करो and display the result. जैसे ही हो चुका है, you are just going to click on run. बस run के ऊपर क्लिक करो and check that out. Is it asking me to enter the value of num1 now? जो भी आपको num1 की वैल्यू चाहिए, say 10, hit enter. num2 की वैल्यू चाहिए 20, hit enter. So that's going to be 20, hit enter. Is it giving me the addition now? Is it clear how to accept those inputs from user? User से inputs को accept कैसे करना है? Clear है? Any questions so far? Let me know any questions into these topics. यहां तक किसी को कोई questions? ये OSD वाला जो पार्ट है, you can just cover it up. थोड़ा सा theoretically पार्ट है, आप पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा. It's all about what exactly the object-oriented software development is. Simple है, not so difficult. बात भी करेंगे लेकिन हाँ, उससे पहले have you understood this part? ये समझ आ चुका है. Don't accept a string like name is equals to xyz. So we do have नहीं next string नहीं. The method का नाम है सिर्फ next. तो int नहीं होगा, सिर्फ next, only next. So it will accept the string over here. तो आप उसको string में catch कर सकते हो. Hold on for entering the strings. Strings के लिए रुको, एक दिन रुको at least. कल हम लोग बात करेंगे. What happens for the string?
चाहिए तो एंटर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप लिखो से इंटर द पर्टिकुलर वी कुड से नेम, और आप यहाँ पे नेम को एंटर कर सकते हो। दैट्स पॉसिबल। मेन के जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन द सेंस इज ओवरलोडिंग ऑफ मेन अलाउड, अगेन दैट वी विल सी इट इनटू द टुमारो सेशन। ओवरलोडिंग के टाइप, ओवरलोडिंग पहले हम लोग सीखेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मेन वेरिएशंस। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट अभी थोड़ा सा एक बचा हुआ पार्ट है, सो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बट इंस्टॉलेशन, वी कुड से राइटिंग द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन फ्लो, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये सारा चीज समझ आ चुका है। ओपी समझ आ चुका है। एनी डाउट सो फार? अगर डाउट्स नहीं है तो वो कुछ थ्योरेटिकल सा पार्ट है थोड़ा सा, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हमें जनरली ऐसे ही करता हूँ, सो लास्ट लास्ट में जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, सो दैट वी कैन कवर इट। बेसिक बेसिक यानी कि बस उसको समझना है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इट्स नथिंग। हाँ ऐसा है, सो दिस इज समथिंग, इट इज देयर, एंड वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, सो दोस आर द थिंग्स। थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे उसको। यहां तक समझ आ चुका है? इज द प्रोग्रामिंग क्लियर टू यू गाइस? इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन होगा बताओ, सो दैट आई कैन रिपीट दोस थिंग्स। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें को रिपीट किया जा सकता है। टेल मी, आर दिस ऑल द थिंग्स क्लियर टू यू? ये समझ आ चुका है पूरा? यस, ऑल क्लियर, फाइन। अब थोड़ा सा थेरोटिकल बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट जावा वगैरह भी थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट, वी कुड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जनरली तीन स्टेजेस यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्री की मैं बात करूँ कि सपोज आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, आप इमेजिन करो कि आप जावा डेवलपर बन चुके हैं, एंड समवन सेज यू कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एंड दैट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी लाइक वी कुड से डेवलप यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ ओपी। तो मुझे डेवलपमेंट ही करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। तो उसके अंदर तीन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जो कि होता है एनालिसिस का, दूसरा स्टेज होता है डिजाइन का, और तीसरा स्टेज होता है वी कुड से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने का। देर आर मल्टीपल स्टेजेस, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्री स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ओओए। दूसरा स्टेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ओओडी। और तीसरा स्टेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओओपी। Inside this object-oriented software development, there are these three stages. पहला object-oriented analysis (OOA), second object-oriented design (OOD), third object-oriented programming that is OOP. पहले स्टेज में एनालाइज किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं, कौन कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने वाले हो, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से बनेंगे? पहला, एक तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तीसरा ऑर्डर्स का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, उनका एनालिसिस किया जाता है पहले स्टेज में। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। उसी का दूसरा स्टेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स बनने वाले, वट एवर द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स, फील्ड्स या डेटा मेंबर्स का एडिशन करना चाहिए। यानी कि हाउ द डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। दैट मीन्स उस एम्प्लॉय का अगर होगा या फिर कस्टमर का होगा, तो कस्टमर के ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी चाहिए, नेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, एड्रेस चाहिए, व्हाट आर द फील्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटा। तो उनका डिजाइनिंग किया जाता है उसके सेकेंड स्टेज में। कौन से सेकेंड स्टेज में? आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेकेंड स्टेज में। आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, व्हाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू फॉलो सम स्टेजेस। पहला स्टेज में यू विल एनालाइज इट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर गोइंग टू, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी क्रिएटेड। सेकेंड स्टेज में जो ऑब्जेक्ट्स बनने वाले उनका डिजाइन कैसे होगा, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट आर द फील्ड्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इनसाइड। And once it is done, then the third step comes up, where you decide which programming language will suit better over here. कि ये जो डेवलपमेंट में करने वाला हूँ, ये जो एप्लीकेशंस में बनाने वाला हूँ, वो कौन सी ओपी की लैंग्वेज के थ्रू बेटर हो सकती है। दिस इज वेयर यू विल डिसाइड टू चूज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड्स टू बी कंसिडर्ड।
तो आप उसमें सी प्लस प्लस कंसिडर करो, जावा कंसिडर करो, पाइथन कंसिडर करो, जो भी ओपी लैंग्वेज आपके सामने है, सी शार्प कंसिडर करो, विच एवर द ओपी लैंग्वेज दैट यू फील कि हाँ इसमें ये पूरा प्रोजेक्ट बन सकता है, नाउ यू कैन टेक अप दैट। इसे कहा जाता है OOST, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नॉट ओनली दैट, इसके बाद वाली स्टेज आती है OOT, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। उसके बाद वाला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेंटेनेंस, OOM। ऐसे अलग अलग स्टेजेस उसके अंदर होते हैं, but at least three you must know, where you can at least decide which programming language you are going to choose. इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? ये समझ आ चुका है? जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट, कोई नहीं पूछेगा, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव, पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ स्टेजेस होते हैं। लेट अस आल्सो टॉक अबाउट, वी कुड से, जावा का क्विक हिस्ट्री अबाउट इट। थोड़ा सा जावा की हिस्ट्री की भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। 1991 में, it was the year 1991 where the Sun engineers, or we could say the team of Sun engineers decided, which was led by James Gosling. So they decided to create one particular language, एक ऐसी लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड की थी कि छोटी सी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे डिवाइसेस के ऊपर, जो आप मोबाइल फोन्स, फीचर फोन्स अगर आपको याद होंगे, कि जिसके अंदर हार्डली कुछ एमबीज ऑफ रैम थी, हार्डली कुछ एमबीज ऑफ स्टोरेज था, तो ऐसे छोटे डिवाइसेस के ऊपर क्यों ना हमारी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट किया जा सके, यानी कि कोड हमारी लैंग्वेज में बनाई जाए, एंड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द स्मॉलर डिवाइसेस। सो व्हाई डोंट वी डिजाइन सच थिंग, व्हाई डोंट वी डिजाइन सच लैंग्वेज? एंड दिस इज वेयर देयर एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्टेड। उनका एम एक ही था, that it must work on very small power and low memory devices, यानी कि जिनके पास पावर भी काफी कम, और वी कुड से बैटरीज पे चलने वाले कुछ आइटम्स है, एंड सेकंड द मेमोरी दैट इज गोइंग टू बी केप्ट इनसाइड दिस डिवाइसेस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उसके ऊपर रन होने वाली लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं बनाया जाए। दिस इज व्हाट द टीम हैज एक्चुअली डिसाइडेड। सो बहुत सारे वी कुड से अलग अलग सीपीयूज, सॉरी, बहुत सारे वी कुड से मैन्युफैक्चरर्स थे, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स थे, देयर वर डिफरेंट डिफरेंट सीपीयूज, द लैंग्वेज कैन नॉट बी बाउंड, यानी कि उस लैंग्वेज को किसी भी एक आर्किटेक्चर के साथ बाउंड करना वैसे भी उस वक्त काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि एट दैट टाइम इफ यू रिमेंबर द एरा ऑफ 1991, काफी सारे कंपनीज अलग अलग खुद का आर्किटेक्चर लेकर के पर्सनल डिवाइसेस को लॉन्च कर रहे थे। सो क्रिएटिंग वन सच पर्टिकुलर लैंग्वेज टू बी बाउंडेड विद वन पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, यानी कि जैसे अगर आप जेवीएम की बात करोगे, तो जेवीएम अभी फिलहाल 3 आर्किटेक्चर्स के ऊपर प्रॉपरली चलता है, लिनक्स, मैक ओएस एंड वी कुड से विंडोज। तो ऐसे आर्किटेक्चरल बाउंड अगर कोई लैंग्वेज क्रिएट करना है, दैट वाज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर भी इसके ऊपर कुछ तो काम करते हैं, लेट अस वर्क ऑन टू इट। एंड फाइनली, क्योंकि ये सारे इंजीनियर्स जो थे वो यूनिक्स बैकग्राउंड के थे, सो दे डिसाइडेड दैट लेट अस चूज फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस प्लस एज अ पर्टिकुलर बेस। तो एक बेस पकड़ के लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। एंड व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू इट, दे क्रिएटेड देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट, उन्होंने उनका पहला प्रोजेक्ट भी बनाया, क्रिएटेड दैट लैंग्वेज, एग्जीक्यूटेड दैट पर्टिकुलर कोड ऑन अ स्मॉलर डिवाइस कॉल्ड एज अ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल। उसका नाम था स्टार 7, उस रिमोट कंट्रोल का नाम था स्टार 7, विच वॉज कॉल्ड एज अ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल। वो एक ऐसा रिमोट कंट्रोल था जिसके ऊपर एक्चुअल में जावा का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। They were executing that particular Java code on top of that device. But no one was interested in that smart remote at that time. Generally कोई भी, मतलब उनकी कंपनी खुद, Sun Microsystem was also not interested into it, बाकी vendors भी interested नहीं। And this is where they decided कि काम करते, let us work onto this language, let us make this language a bit good onto it, and let us use it somewhere else. द सेम एरा, उसी वक्त जनरली जो 1991 का पीरियड था, 1991 से लेके 1995 1996 तक का जो पीरियड था, दैट वाज आल्सो द एरा ऑफ द इंटरनेट। एंड इंटरनेट के एरा में, यानी कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ डॉट कॉम, जो डॉट कॉम बबल लास्ट लास्ट में बना था, यानी कि जब डॉट कॉम वेबसाइट्स जब बन रही थी, काफी सारी वेबसाइट जब बन रही थी, सो टू इंटरैक्ट विद दोज वेबसाइट्स, टू एक्सेस दोज वेबसाइट्स, यू एक्चुअली नीड द ब्राउजर। तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ब्राउजर की। एंड ब्राउजर वाज द, वी कुड से, वन ऑफ द हॉटेस्ट एप्लीकेशन दैट वाज अवेलेबल इनटू द मार्केट, क्योंकि उस वक्त ब्राउजर्स भी पेड आने लगे थे। बाद में वी कुड से द माइक्रोसॉफ्ट केम इनटू द मार्केट और एंटर्ड इनटू द मार्केट, वेयर इट स्टार्टेड ऑफरिंग इट्स ब्राउजर फॉर फ्री, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि जिसकी वजह से अब आजकल जो ब्राउजर्स आप देख रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इट वाज द एरा वेयर द इवन ब्राउजर्स वेर पेड। द ब्राउजर्स वर नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कोड डायनामिकली, यानी कि जो भी दिख रहा था पहले स्टैटिक पेजेस थे,
And this is where Java came up with their own browser called as the hot browser, which was able to execute the Java code within that browser. यानी कि जावा का कोड उस ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होकर के इट वाज एबल टू हैव द डायनामिक बिहेवियर टू दोस वेबसाइट्स. उस वक्त उन्होंने जो ब्राउजर बनाया था हॉट जावा ब्राउजर, दैट बिकम वेरी पॉपुलर. और जो जावा कोड उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा था उन्हें वो जनरली कहा जाता था एप्लेट्स. And because of this, the Java's popularity went to the next age. यानी कि इस ब्राउजर की वजह से, because of executing this Java code within the browser to make those pages dynamic, इस वजह से जावा की पॉपुलैरिटी यहां से बननी स्टार्ट हुई. And this is where now you have reached the era where you know that the Java is kind of a legacy language now. मतलब काफी सालों से ये एक पॉपुलर लैंग्वेज बनी हुई है. Started right from here. उसका पर्पस वही था. द पर्पस ऑफ द जावा वाज द सेम थिंग कि लाइक इट शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन टू द स्मॉलर डिवाइसेस. आर्किटेक्चर का वी कुड से जो प्रॉब्लम था दैट इट इनिशियली एवरी लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू वर्क विथ आफ्टर द कंपाइलेशन इट इज ऑलवेज आर्किटेक्चर स्पेसिफिक. हर एक आर्किटेक्चर के डिपेंडेंट द एंटायर कोड हैज टू बी जनरेटेड. तो उसको अवॉइड करने के लिए दे ऑल्सो एडेड समथिंग कॉल्ड एज द जेवीएम, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, द जावाज वर्चुअल मशीन. So that virtual machines is architecture dependent. हर एक architecture का JVM अलग अलग होगा, but the code that you are going to execute is going to be common for all of that. यानी कि जो byte code उस JVM को जाएगा that will be common. And that's why generally it is said that the Java follows the principle called as the VORA, write once, run anywhere. यानी कि एक ही बार जावा का कोड लिखो, एक ही बार कंपाइल करो और उसको जिस मशीन के ऊपर चाहिए, जिस OS के ऊपर चाहिए, you can start executing it. That's what the Java is all about. Now अगर आप जावा के वर्जन्स नोटिस करोगे, द वर्जन्स दैट वाज रिलीज्ड, दैट वाज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट, तो उसका जो बीटा वर्जन था रिलीज्ड इन 1995 और उसके एक साल बाद 1996 में जावा का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था जिसे वो लोग कहते थे जेडीके 1.0. यानी कि उसका नाम भी वैसे था जेडीके 1.0. जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख चुके हो कि जेडीके 21 हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इसका नाम था जेडीके 1.0. Similarly, next year में उसका next version, उसके next year में we could say the next version which was Java 1.2. इस 1.2 को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया था उस वक्त. They called it as J2SE, जिसे कहा जाता है Java 2 Standard Edition. Java का second version and they called it as a standard edition. This was the version where the Java's collections were introduced. Collection framework का introduction इस version में किया गया था. ये बस एक वर्जन नंबर याद रखो. जावा के 1.2 वर्जन में, जावा सेकेंड वर्जन में कलेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ. देन केम अप द जावा 3, जावा 4 एंड फाइनली केम अप द जावा 5 इन 2004. यानी कि जावा का पहला वर्जन लॉन्च हुआ 1996 में, उसका फिफ्थ वर्जन लॉन्च हुआ था 2004 में. एटलीस्ट ये 2-3 वर्जन है जो कभी कभी बस आपको पता होने चाहिए. सो इफ यू आर वर्किंग विद सम लेगेसी प्रोजेक्ट्स, बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, you must do this. Java 5th वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था enum generics and annotation. यानी कि जावा 4 तक जेनेरिक्स का कोई कंसर्न था ही नहीं, यानी कि कंसेप्ट प्रेजेंट ही नहीं था. इट वाज एडेड लेटर इवन इन जावा 5. द एंटायर कलेक्शंस वेर बीन मॉडिफाइड लेटर ऑन. यानी कि काफी सारी चीजें नेक्स्ट न्यूअर वर्जन्स में मॉडिफाई हुई है. सो इट इज वन ऑफ सच एग्जांपल. कलेक्शन फ्रेमवर्क इज वन ऑफ सच एग्जांपल कि जो जावा 5 के बाद पूरी तरीके से मॉडिफाई हो चुका है. एग्जिस्ट हुआ था 1.2 में, मॉडिफाई हुआ है जावा 5 के बाद. जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था इनम जेनेरिक्स एंड एनोटेशंस. ये वो वर्जन था जिसमें उसको इंट्रोड्यूस किया था. Then again came the different versions in every different year. That means 2006 में 6th वर्जन लॉन्च हुआ था. 2011 में we could say 7th वर्जन लॉन्च हुआ. और जो 2014 में लॉन्च हुआ था वर्जन, which went on for a very vast number of years, the popularity went on. It was the Java's 8th version, launched in we could say 2014. This version was called as an LTS, that means long term support version. इस वर्जन में अगर कुछ भी बग्स आते हैं, यानी कि कुछ लाइब्रेरीज में प्रॉब्लम्स आते हैं, if there are any problems, the Java's, the Sun microsystem is liable to solve that problem for. यानी कि उन बग्स को रिजॉल्व करके उन लाइब्रेरीज को अपडेट करके देने की जिम्मेदारी उन सन माइक्रोसिस्टम के डेवलपर्स की थी, बिकॉज दिस वर्जन वाज द लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन. बीच में अगर आपको कोई वर्जन दिखते हैं विच आर नॉट एलटीएस वर्जन, दैट मीन्स उनके लिए सपोर्ट नहीं दिया जाएगा. द लैंग्वेज इज बीन डिजाइन, हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा
लेकिन अगर कुछ चेंजेस या फिर यहाँ पे वहां पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, दे जनरली से दैट वी डू नॉट सपोर्ट दिस वर्जन फॉर मे बी वी कुड से दिस ईयर और दैट ईयर, यू माइट स्विच टू सम डिफरेंट वर्जन्स। यानी कि जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ है उस ईयर में मे बी नेक्स्ट ईयर में दे आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट वर्जन एंड दे विल टेल यू कि पुराना वर्जन यूज मत करो, नया वर्जन यूज करो। If the version is an LTS version, that means within that particular version, whatever the changes are required, those changes will be done for you. For you in the sense, अगर आपने कोई प्रॉब्लम उनको नोटिस करके देखा है कि लाइक दिस इज द प्रॉब्लम इनसाइड योर वर्जन, इसमें कुछ लाइब्रेरीज में अगर प्रॉब्लम है, नाउ दोज लाइब्रेरीज विल बी अपडेटेड फॉर इट, उनको इमीडिएटली अपडेट किया भी जाएगा। तो एलटीएस के वर्जन जितने भी होते हैं उन्हें कहा जाता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, यानी कि उनके ऊपर का सपोर्ट काफी लंबे समय तक दिया जाएगा। So similarly, like we could say Java 8 released in 2014, 2018 के अंदर Java 11 को लॉन्च किया गया। Not only that, similarly Java 17 जो कि एक LTS वर्जन है, it was released in Java, we could say 2021। Similarly 2023 के अंदर Java 21 को रिलीज किया गया, यानी कि जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 21, it was released way back in 2023। And once again we have a 25th version, which is an again long-term support version, which was released we could say in the last year, it is 2025। तो ये कुछ अलग अलग जावा के वर्जन है, सारे याद नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट के वर्जन कौन कौन से है। वी हैव द वर्जन लाइक वी कुड से जावा 8, जावा 11, जावा 17, जावा 21 एंड फाइनली वी हैव द जावा 25। लेट मी नो, आर दिस वर्जन क्लियर टू यू? वर्जन समझ आए? हाँ, क्या करोगे मतलब, आर यू गोइंग टू बाय हार्ट दिस? नो, बस 4-5 वर्जन पे अगर आपको पता है तो पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्जन से इस साल में रिलीज हुए थे, these were the years when these versions were released, बस that's it, just a piece of information। now if you talk about java के अलग अलग we could say variants available हैं। variants in the sense the java can be used for development onto different platforms। जैसे फॉर एग्जाम्पल जावा कार्ड करके we could say we have one of the java platform which can be used to execute the java code, यानी कि उसी जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए onto the smaller devices like we could say the smart cards, we could say remote controls, the cable, the set top boxes that we are actually talking about। तो उनके ऊपर जो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की जरूरत है, so for that we can generally use the java card or we could say the platform given by the java called as the java card। Similarly, there is one more platform called as the Java ME, जिसे कहा जाता है माइक्रो एडिशन। Generally, it has we could say the system where you can start executing the Java code onto the smaller devices like the Symbian phones that we had earlier। ये बहुत पुरानी पुरानी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपने फीचर फोन्स की बात की है या फिर अगर आपने नोकिया के पुराने 3310 वगैरह फोन्स अगर आपने देखे हैं जिसके अंदर सिम्बियन वी कुड से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज किया जाता था, तो ऐसे छोटी छोटी डिवाइसेस के ऊपर जनरली जिनकी मेमोरीज काफी वीक है, यानी कि हार्डली 2 MB 3 MB ऑफ रैम वगैरह हो सकता है, या फिर हार्डली केबीज में रैम हो सकता है, और या फिर वी कुड से एमबीज में स्टोरेज हो सकता है, ऐसे छोटे डिवाइसेस के ऊपर। या फिर अगर आपके कुछ प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, स्मार्ट प्रिंटर्स होते हैं, उनके ऊपर इफ यू नीड टू डेवलप सम एप्लीकेशंस, दिस इज वेयर यू कैन यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अ जावा एम। The one that we are using right now is called as the Java SE, also called as the standard edition। This standard edition that means it is used for creating the desktop based application। जो कंसोल एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर आपको यूआई वगैरह बना करके स्विंग वगैरह यूज करके बनाना है, दिस इज वेयर यू गो फॉर द जावा स्टैंडर्ड एडिशन लाइब्रेरी। एंड फाइनली इफ यू वांट टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन, सर ये नहीं चाहिए, डेस्कटॉप नहीं चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, आई वांट टू गो फॉर वेब एप्लीकेशन, आई वांट टू क्रिएट द रेस्ट एपीआईज, दिस इज वेयर यू शुड गो फॉर द enterprise edition, that is nothing but the java EE। तो ऐसे 4 जावा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म को आप टारगेट करने वाले हो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर वी कुड से प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट एक्चुअली द जावा इज। तो अगर आप स्पेसिफिकली जावा की बात करोगे तो जावा की हिस्ट्री, जावा के वर्जन्स, जावा के प्लेटफॉर्म्स, जस्ट गो थ्रू इट। थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट। द मेन पार्ट इज लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू इम्प्लीमेंट नाउ। थ्योरेटिकल पार्ट वो तो होता ही रहेगा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी हाउ, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज लाइक हैविंग द हैंड्स ऑन एटलीस्ट ऑन दिस पार्ट्स, कि आज आप जाकर के यू विल बी कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन, आज ही के दिन यू विल बी कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन, यू विल बी कंप्लीटिंग द we could say the first program, you will be checking how it can be done from the command line,
how it can be done from an STS चाहिए तो STS को install करो and do perform all those things. Let me know. Is it clear so far? यहाँ तक सबको clear है? Any questions so far? यहाँ तक किसी को कोई questions? जस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपको मिल जाएगी, कौन से डॉक्स यूज करना है, क्या यूज करना है, ये कल मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिंक्स जो भी है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा. दिस इज द एग्जैक्ट पीडीएफ फाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये आपको मिलने वाली है. सो इवन दिस पीडीएफ फाइल इज गोइंग टू बी गिवन टू यू, एंड इवन द नोट्स दैट आई हैव क्रिएटेड वो भी मिलने वाली, ये भी मिलने वाली, वो भी मिलने वाली, दोनों फाइल्स मिलने वाली. सो ये दो फाइल्स, वी कुड से द प्रोग्राम्स दैट वी हैव क्रिएटेड, ये सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है. Yes. Any questions so far? No. Have you understood these topics? क्या ये टॉपिक समझ आ चुके हैं? अरे सच में समझ आ चुके हैं. हमें बहुत आगे तक जाना है. वी आर नॉट इवन हियर, अभी हम लोग यहाँ पे भी नहीं है. सो इट इज जस्ट द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टॉक अबाउट. ओपी कंसेप्ट वगैरह बातें की. लैंग्वेज फंडामेंटल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं. वी हैवंट टॉक्ड अबाउट डेटा टाइप्स, वी हैवंट टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स इनटू इट. बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी, आई वुड से. ओपी कंसेप्ट के अंदर सारा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, वी कुड से इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, वो सारा करके देखना है. सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग. ये सिर्फ एक काइंड ऑफ छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था दैट वी हैव ट्राइड टू कवर इट अप. सो वट एवर द थिंग्स दैट हैव अंडरस्टूड, नाउ डू फॉलो इट. बस दो तीन चीजें आपको करनी है. प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द एंटायर डे, यानी कि आज पूरा आफ्टरनून के बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट. अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन पोस्ट दैट मैसेज टू मी, आप मुझे वो मैसेज पोस्ट भी कर सकते हो. इफ नॉट यू कैन ज्वाइन द मीटिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, एक 10 मिनट पहले आप ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम. नहीं, अगर आपको लगता है नहीं क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा बड़ा है और मे बी इट इज समथिंग दैट आई हैव डन यस्टरडे, प्रैक्टिकली मैंने कुछ तो किया था और कुछ मुझे वहां पे समझ नहीं आया है, सम एक्सप्लेनेशन आई नीडेड, तो आप वो क्वेश्चन मुझे पोस्ट करके भी रख सकते हो. इफ इट इज रिलेवेंट विद द न्यू टॉपिक और देयर इज अ रिवीजन, वो रिवाइज होगा. नहीं, यू कैन स्टे इन टू द मीटिंग टिल द लास्ट, और 1 बजे के बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग अप दोस क्वेश्चंस. यानी कि जैसे हमारा सेशन खत्म होगा, आई विल डू टेक दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. आपसे जितने भी टेक्निकल जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होंगे, वी विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है. Fine. आज के लिए इतना काफी है. सो इट डजंट मेक सेंस एनी मोर टू गो फॉर एनी फर्दर टॉपिक्स. हाँ, लेकिन कल की जो टॉपिक्स है वो मैं बता के रखता हूँ. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज अ क्लास, ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस. हम लोग पहले इसके साथ स्टार्ट करेंगे. क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट हाउ द एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. व्हाट इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल क्लासेस, उसकी डॉट क्लास फाइल कैसे बनती है. We will talk about that. Not only that, we will talk about maybe if time permits, we will also talk about the packages. नहीं, तो एटलीस्ट मेथड्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करना है. मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. And also we will talk about something called as a public. Also we will talk about, we could say, multiple classes creation in the same Java file. And what if I want to create multiple .java files? इसकी बात है. यानी कि ये सारी चीजें हमारी कल की, वी कुड से, कल का एजेंडा रहेगा. टुडे दिस इज मोर देन सफिशिएंट. आज वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. बिफोर दैट, थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन. Tomorrow same time, same meeting, it is not going to change. Be there in time so that we can start the session exactly at 9. Let me stop this recording now. And if you have any questions, you can post it into the chat box.